भली तरह जा कंडा खणी गुलाब न कर, असांजूं आसूं मगर या खुदा सराब न कर। जिन्हीं खे चाहियूं उन्हनि खे बि ख़ुशि रखी न सघूं, असांखे पंहिंजी नज़रुनि में ई ख़राब न कर। मां हिकु दफ़ो ॿीहर गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अयाज़ गुल साहब जन खे त उहे अची करे आजियाणे जी तक़रीर तव्हांजे साम्हूं कंदा। महिरबानी मोहन साईं। सखर आर्ट्स काउंसिल जे अदबी शोबे पारां मां बहसियत कन्वीनर ऐं पंहिंजनि मेंबरनि मोहतरम सैयद नूर रिज़वी साहब, डॉक्टर बदरुजन साहब ऐं आफ्ताब महमूद मलिक साहब पारां अवां सभिनी जो बेहद थोराइतो आहियां ऐं अवां खे भलीकार चवां थो जो अवां असांजे सॾ ते हमेशह जियां पंहिंजूं मसरूफ़ियतूं विसारे उन्हनि खे पोइते रखी ऐं असांजे हिन प्रोग्राम में शरीक थिया आहियो। असांजी रवायत रही आहे त टिनि तख़लीक़कारनि जे जेके बि प्रोग्राम असीं कया आहिनि, हिन वक़्त ताईं 6 प्रोग्राम थी चुका आहिनि, उन में कोशिशि कई आहे त जेके बि यूनिवर्सिटियूं सखर खैरपुर ऐं खैरपुर खां ॿाहिरि जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि उन्हनि जे सरबराहनि खे, उन्हनि जे वाइस चांसलर्स खे दावत ॾेई घुरायूं, छो त ही जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि उहे जेके दर्सगाह आहिनि इहे असांजे लाइ रोशनीअ जा मीनार थियनि था, जिथे असांजो नओं नस्ल पढ़ी करे ॿाहिरि निकिरे थो ऐं उहो सॼे जग में रोशनी फैलाइण जो कमु करे थो, त यकीन उन्हनि जा सरबराह इन हवाले सां घणी अहमियत वारा थियनि था, मोहतरम थियनि था। असांजे लाइ इहा बेहद ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त साईं प्रोफेसर डॉक्टर मदद अली शाह साहब शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बेनज़ीराबाद नवाबशाह जो वाइस चांसलर आहे ऐं असांजे सॾ खे मान ॾींदे साईं हिते आयो आहे। मां उनजो बेहद थोराइतो आहियां। असांजो शाह साहब सां दिली रिश्तो बि आहे जो असां हिकिड़े यूनिवर्सिटीअ में को वक़्तु गॾु कलीग रहिया आहियूं, गॾिजी कमु कयो आहे ऐं उन खां पोइ शाह साहब ॿाहिरि हलियो वियो पढ़ण जे लाइ, त मोटी आयो त हुन IBA जॉइन कई। IBA खां मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खैरपुर जो वाइस चांसलर रहियो ऐं उन खां पोइ हाणे नवाबशाह में जेके पाण बेनज़ीराबाद जो नालो ॾिनो वियो आहे उन में वाइस चांसलर आहिनि। साईं तव्हांजा वॾा कुर्ब जो अमां तव्हां असांजे सॾ खे मान बख़्शियो आहे ऐं हिते आया आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। दोस्तो, अॼु असीं जिन 3 शख़्सियतुनि जे हवाले सां ही प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, सखर जे इल्मी अदबी हल्कनि में उन्हनि जो नालो आहे ऐं उन्हनि जी मञता आहे ऐं उन्हनि जो कमु आहे, उन कंट्रीब्यूशन जेको उन्हनि जो आहे उन्हनि खे मान ॾियण लाइ असीं हीअ महफ़िल कोठाई आहे। नक़द बरेलवी साहब, नक़द बरेलवी साहब उर्दूअ जो तमामु सुठो शाइर रहियो आहे। सखर जो सां उन जो तालुक़ो उनजा वॾा बरेली इंडिया खां हिते आया ऐं पुराणे सखर में अची उन्हनि सकूनत इख़्तियार कई ऐं हिते रहिया। उर्दू ऐं सिंधीअ जो जेको पाण में राब्तो हुयो उन हवाले सां नक़द बरेली साहब जो तमामु घणो कमु आहे। 90 वारे ॾहाके में हू सखर छॾे कराचीअ हलियो वियो। असांजे ॿियनि केतिरनि ई ॿिया जेको उर्दूअ जा खोड़ अहिड़ा शाइर ऐं आलिम अदीब हुया जिन जो तालुक़ु जेको आहे उर्दू ज़ुबान सां हुयो, उर्दू अदब सां हुयो, जंहिंमें प्रोफेसर आफ़ाक़ सिद्दीकी साहब ऐं ॿिया खोड़ जेके हितां उहे हलिया विया ऐं उते वञी करे कराची हलिया विया। ईअं ई जेको आहे नक़द बरेली साहब बि 90 वारे ॾहाके में कराची हलियो वियो ऐं संदसि शाइरीअ जो हिकिड़ो किताब बि छपियलु आहे। 2022 में कराचीअ में ई हुननि जी वफ़ात थी आहे ऐं असीं ज़रूरी सम्झोसीं त सखर सां तालुक़ु हुजण जे करे हुननि खे असीं मञता ॾियूं ऐं उन्हनि खे यादि कयूं पंहिंजी मोहबतुनि में, पंहिंजी अक़ीदतुनि में। ॿी शख़्सियत आहे ग़ुलाम मुर्तज़ा जागीरानी साहब। ग़ुलाम मुर्तज़ा जागीरानी साहब जो नालो बि तमामु अहम आहे। 1942 में हुन जनमु वरितो हुयो। कंदरा जे भरिसां हुननि जो ॻोठु आहे
ऐं ख़ासि करे जेका असांजी ट्रेडिशनल शाइरी आहे उन में ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जागरानी साहिब जो हिकिड़ो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। सखर में सखर खां रोड़ीअ में जेके मुशाइरा थिया, तरही मुशाइरा ख़ासि तौर ते उहे उन्हनि जे कोशिशुनि सां तमामु घणा कराया विया ऐं उन्हनि जो हिकिड़ो लाॻापो जेको आहे ॿिन्ही पासनि सां रहियो। रवायत जिदत सां उन्हनि जी जेका संगत वारो हिसाबु उहो बि ऐं शाइरी वारो हिसाब बि रहियो। ऐं संदन बि हिकिड़ो किताबु शाया थियल आहे। जिन दोस्तनि खे उन्हनि ते इन्हनि शख़्सियतुनि ते मक़ाला पढ़णा आहिनि उहे तफ़सील सां उन्हनि ते ॻाल्हाईंदा। मां सिर्फ़ु मुख़्तसर तारुफ़ अवां ॾियारो पेश करे रहियो आहियां। बशीर मंगी साहबु असांजो नौजवान दोस्त जेको ईअं चवां त कम उमिरि में, उनजी अञा घणी उमिरि एॾी कोन हुई पर उहो कम उमिरि में ई फोत थी वियो। जंहिं ज़माने में मां सेक्रेटरी जनरल हुउसि सिंधी अदबी संगत जो, उन ज़माने में हुनखे पहिरों भेरो सखर जो सिंधी संगत सखर जो सेक्रेटरी बणायो हुयो ऐं जेसिताईं मां रहियुसि तेसिताईं उहो ई सेक्रेटरी रहंदो आयो। जाखोड़ी किरदारु हुयो, घणो महिनती किरदारु हुयो ऐं उनजा बि काफ़ी 4-5 किताब जेके आहिनि उहे शाया थियल आहिनि मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते। ऐं असांखे इहा बि ख़ुशी आहे त असां वटि साईं इरशाद अली जागरानी साहिबु जेको ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जागरानी साहिब जो वॾो पुटु आहे ऐं ॿियो नंढो पुटु आहे, उहे असांजी हिन महफ़िल में मौजूदु आहिनि ऐं पंहिंजे ख़ानदान जी नुमाइंदगी करे रहिया आहिनि। साॻिए तरीक़े सां अब्दुल लतीफ़ बशीर मंगी साहिब जो फ़र्ज़ंद ऐं उन्हनि जी अदिया या नोआ ऐं उन्हनि जी न्याणी जेका आहे उहा असां वटि अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहे। मां ॿिन्ही खे भलीकार चवां थो, साईं जागरानी साहिब खे, अब्दुल लतीफ़ खे ऐं असांजी न्याणीअ खे ऐं अवां सभिनी खे बि दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। ऐं तमामु घणा थोरा तव्हांजा जो तव्हां असांजे सॾ ते आया आहियो। नाला खणबा त इलाही वक़्तु लॻी वेंदो, चाहियूं था त वक़्तु सिर्फ़ु प्रोग्राम शुरू थिए ऐं वक़्त ते ख़तमु थिए, छो त सभिनी माण्हुनि खे पंहिंजूं पंहिंजूं मसरूफ़ियतूं बि आहिनि त उहे जीअं हलिया वञनि। हिकु भेरो ॿीहर मां सिंधी सखर आर्ट्स काउंसिल जे अदबी शोबे पारां पंहिंजनि सभिनी साथियुनि पारां जेके हिन अदबी कमेटी जा मेंबर आहिनि उन सभिनी जे पारां मां जो थोराए थो आहियां ऐं मूंखे भलीकार चवां थो। वॾी महिरबानी। मां गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम शेख इरशाद खे त हू अची करे मोहतरम बशीर मंगीअ ते पंहिंजो इरशाद शेख साहब अची करे पंहिंजो मक़ालो पढ़े। मोहतरम इरशाद शेख साहब। स्टेज ऐं साम्हूं सभिनी दोस्तनि खे हक़ मौजूदु। मां पंहिंजो मक़ालो शुरू करण खां अॻु में साईं अयाज़ गुल साहिबु, मुमताज़ बुखारी साहिबु, साईं अदल सुंगर साहिबु, अख्तर दरगाही साहिब जो बेहद थोराईंदो आहियां जो अॼु मूंखे इहो मौक़ो फ़राहम थियो आहे त बशीर मंगीअ ते मां कुझु पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयां। ऐं जेको अॼु मुंहिंजो जेको इहो मक़ालो आहे उहो बि कुझु बशीर जी शाइरीअ जे फ़न जे हवाले सां न पर उन जी ज़िंदगीअ जे ऐं उन जी अदबी कमनि जे हवाले सां कुझु आहे। उमेदु आहे त तव्हांखे पसंदि। मुंहिंजे मक़ाले जो उनवान आहे सखर बिराज जे 66 दराज़नि जहिड़ी दिलि रखंदड़ बशीर मंगी। हूअं त बशीर मंगी पाणीअ वारे खाते जे चीफ इंजीनियर जो PA सखर में हुयो, पर अंदर में जाती पाए ॾिसबी त महसूसु थींदो हो माण्हू ॾिया ॿारे ॾियारी मल्हाईंदा आहिनि, पर बशीर मंगी उन्हनि माण्हुनि मां हिकु हो जेकी ॾियारीअ में ॾींहंनि बदिरां पंहिंजो पाण खे ॿारे छॾंदा आहिनि। जिन दोस्तनि ते संदसि अहसान हुआ से ज़रूरु मुंहिंजी हिन ॻाल्हि सां सहमत थींदा त बशीर मंगी हणा वणा ॾेई उजामियल दोस्तनि आॾो बिराज पुल जे बल्फनि वांगुरु ॿरी पवंदो हो। मूंखे शेख अयाज़ साहिब जे गज़ल जूं कुझु सिटूं यादि अची रहियूं आहिनि। सारे शहर वसाया पत्थर जिन सां चकना चूर हुयो, पोइ बि हुन थी नारा मारिया मुड़ुस त को मंसूर हुयो।
वस्तीअ वस्तीअ नगरीअ नगरीअ गीत असांजे गूंज कई चांडोकीअ में चंग वॻो थिए राति पिरीअ जो पूर हुयो। बशीर मंगीअ सां तंज़ीम जे हवाले सां कॾहिं इख़्तिलाफ़ रहिया, पर तंहिं हूंदे बि जॾहिं बि हिन सां कचहरी लाइ वयसि त हिन चेहरे ते कॾहिं बि गुंज न आंदो हो। हू मुर्की बाहुनि जो हार पाराए आदर भाउ कंदो हो। अॼु जॾहिं संदसि शहरी मजमूए केरु तो मूंखे सॾे जे सिफ़े नंबर 34 नंबर ते मौजूदु शहर ते नज़रूं भेजी वञनि थियूं, पहिरियों प्यार पहिरीं नज़र यादि रखजांइ, अड़े बेख़बर बेसबर यादि रखजांइ, मूंखे विसारणु ॾुखियो तोखे लॻंदो, मूंखे विसारणु ॾुखियो तोखे लॻंदो, यादूं ऐं वाइदा ज़िक्र यादि रखजांइ। अॼु बशीर मंगीअ जी गैर मौजूदगीअ खे 4 साल गुज़री चुका आहिनि, पर असां मां कंहिंखां बि बशीर मंगी विसरी नाहे सघियो। हू पाण खां रुठल दोस्तनि खे इन तरह सिफ़े नंबर 20 नंबर में मिनथू कंदे मिले थो, साहु में साहु कोन्हे को, ज़िंदगीअ में चाहु कोन्हे को, रुसी ॿीहर जे पर्ची पऊं उन्हीअ में गुनाह कोन्हे को। बशीर मंगी अदबी लिहाज़ खां अदीब, शाइर, कालम निगार, सफ़र निगार, सिंधीकार ऐं कहाणीकार जे ख़ूबनि सां सुञातो वेंदो हो। बशीर मंगी घणो अरसो क़ौम परस्ती जी सियासत जिसाब में रहियो, तंहिंजे करे हिन कलमी पहिरियों नसर निगारी खां शुरू कयो, पोइ वरी शाइरी ॾांहुं रुख कयो ऐं 2004 में वॾो फड़ो नाले हाइकनि जो मजमूओ शाया करे जदीद सिंधी अदब में हिकु नई तारीख़ रक़म कई। संदसि मजमूए मां खयल कुझु हाइका हिन तरह सां मिलनि था। केॾो आहे सुंदर पहाड़नि कुख में पुराणो कालका जो मंदरु, सीअ में ॾके थो पोड़ो थधे पाणीअ सां गोरी फके थो। बशीर मंगी 1 अप्रैल 1963 ते पंजू देरो ज़िले लारकाणे में मोहम्मद पुनल मंगीअ जे घर जनम वरितो। शुरूआती तालीम ॻोठ ऐं लारकाणे मां हासिल कयाई, पोइ माशियात में MA कयाई। 90 वारे ॾहाके में नौकरीअ जे सिलसिले में जॾहिं बशीर मंगी सखर आयो, अदबी फ़ज़ा में संदसि सुञाणप जल्द थी वई। अदल सुमरो साहब, अयाज़ गुल साहब, फ़ता मलक साहब, हादी भट्ट साहब, मंज़ूर बेदार साहब, हबीब साजिद साहब, मजीद नवाज़ मुग़ल साहब ऐं शिकारपुर जे इल्मी अदबी दोस्तनि में आदर्श ज़िया शाह सां गॾु सिंधी अदबी संगत शाख सखर जे सरगर्मी दौरान ख़ालिद करम बिरोई, सचल भट्टी ऐं फ़क़ीर मंज़ूर हुजण जहिड़नि अदीबनि सां संदसि वेझराई रही। ख़ासि तौर ते रज़ाक सेते सां संदसि दोस्ती दिलि जे गहराइनि ताईं पहुतल हुई। सिंधी अदबी संगत शाख सखर में संदसि सरगर्म किरदार सबबि खेसि ॿीहर बिना मुक़ाबले सेक्रेटरी बणण जूं आशूं बि थींदियूं रहियूं। 1999 में सिंधी अदबी संगत शाख सखर पारां रशीद भट्टीअ जी यादि में नींह जबल ते हिकु यादगार मुशाइरो संदसि कोशिशुनि सां रथियो वियो, जंहिंमें सॼी सिंध जे शाइरनि शिरकत कई ऐं मूंखे पहिरियों भेरो कालका मंदरु नींह जबल जी ऊचाईअ तां बीही अरोड़ खे वेझे खां ॾिसण जो मौक़ो मिलियो हो। उहो मुशाइरो सखर जी अदबी तारीख़ में हिकु अहम बाब ॻणिजे पियो। 2010 ॾहाके जूं शामूं अॼु बि दिलि जे दीवार ते ताज़े नक्श वांगुरु चिटल आहिनि। आदमशाह कॉलोनी गरम गोदी इलाइक़े खां अलशिफ़ा हॉस्पिटल ऐं हाई कोर्ट जे बिल्डिंगनि जे विचां गुज़रंदा ॻाल्हियूं कंदा अमर अयाज़ महर मुरीद सिंधी ऐं मां बिराज कॉलोनी जे हिकु क्वार्टर जे दर खड़काइण महिल
बशीर मंगी निकिरी ईंदो हो ऐं हिकिड़ी नंढड़ी खट खे पासीरो ॿांहां विझी दर खां ॿाहिरि कढी खट खे घिटीअ जे कंहिं पासे रखी चवंदो हो अचो वेहो। पोइ हिकु कचेरी थी वेंदी हुई। बशीर मंगी जे चवण खां बग़ैर चांहियूं बिस्कुट हाज़िर थी वञनि। असां टई ॼणा पाण खां सीनियर कुर्बाइते मिसाली इंसान सां जॾहिं घिटीअ में कचेरी कंदा हुआसीं त महसूसु थींदो हो हिकु नओं इल्मु, हिकु नओं ज़ौक़ ऐं हिकु नई दुनिया असांजे अॻियां आहे। अदबी संगत जा किसा, शाइरनि जा हवाल, नवां बहस, पुराणियूं यादूं, सभु कुझु बेतरतीब हुआ, पर दिलि जे किताब में अॼु बि सजायल आहिनि। बशीर मंगी वॾो अरसो हिकु अदीब, शाइर ऐं मुहक़क़ जे अनोखी अखि सां चाइना साइकिल ते सकर जूं घिटियूं घुमी माण्हुनि जी ज़िंदगी, शहर जी तारीख़ ऐं फितरत जे रंगनि खे महसूसु कंदो हो। नई सदीअ जे इब्तिदा में मोटर साइकिल हलाइणु शुरू कई ऐं प्रोग्राम में शिरकत में इज़ाफ़ो वधीक सवली ऐं संजी बणिजी वई। बशीर मंगी हिकु घणो मुतालो ऐं नोबल इनाम याफ़्ता मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतनि जा हवाला पंहिंजे मज़मून, तहरीरनि ऐं तक़रीरनि में हमेशह ॾींदो हो। हिन जो 2000 में शेख हयात जे मींहं कणियूं हाइकनि जे मजमूए ते जॾहिं तनक़ीदी मक़ालो सोजरो कराची रसाले में शाया थियो हो, तंहिंखां पोइ हिन जी अदबी तनक़ीद जाइज़ो शाइर थियण खां पोइ संदसि हिंद ऐं सिंध जे अदीबनि में हिकु नक़ाद तौर बि मुतारफ़ थी वियो हो। बशीर मंगी पंहिंजे मारवाड़नि जा दर्द कलम जे नोक मां सिगरेट फुले वांगुरु छाणे छॾंदो हो, जंहिंमां रक़्स सां गॾु सन्हियूं चिंगारियूं हवाउनि सां गॾु सरगर्म थी वेंदियूं हुयूं। हीउ यार मोहबत जे मद पियाकनि मां बि हो त हसीननि जे नेरनि जो असीर बि हो। लतीफ़ सरकार चवाणी त माण्हू घुरनि माल ऐं सभु ॾींहं घुरिया सिपरी। बशीर मंगी अहिड़ो ई त हो, रुगो दोस्तनि जो ख़ैरु घुरंदो हो, दिलि दरिया रखंदो हो। प्रोग्राम जी वापसी खां पोइ या सखर खां ॿाहिरि कंहिं प्रोग्राम में शिरकत करण लाइ अक्सर दोस्तनि खे दिलशाद होटल ते गॾु थियणो पवंदो हो। तॾहिं बि चांहि पीआरण में बशीर मंगी हूंदो हो। कंहिंजो किताब छपजी पधिरो थींदो हो, एज़ाज़ी किताब सां गॾु किताब बि ख़रीद करे वठंदो हो। हिकु ॾींहुं बशीर मंगी मूंसां रोई पियो हो। जॾहिं सखर में लाड़काणे खां लॾे आयल दोस्त जा वेसाव ऐं साराह जा डुक भरदे थकंदो न हो, उहो ई दोस्त राहूं जुदा करे तंज़ कंदे साम्हूं अची वियसि ऐं झुंगाइणु लॻो, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, ज़िंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। अहिड़ी कैफ़ियत में हूंदे बि संदसि फ़िक्र क़ौमी शऊर, धरतीअ जी मोहबत, इंसानियत ऐं अमन सां भरपूर रही। बशीर मंगी साईं GM सैयद जे फ़िक्र खां मुतासिर थींदे कॉलेज वारे ज़माने में जिसाफ़ में गुल मोहम्मद जखराणी साहब सां बहादुर ऐं नज़रियाती अॻुवाण सां वेझराई रही। अहिड़ी निस्बत हिन खे क़ौमी सुञाणप ऐं इंसानी भाईचारे जी राह ॾांहुं वठी वई। संदसि तहरीरनि में सचाई, दर्द ऐं फ़िक्र जी गहराई साफ़ महसूसु थींदी हुई। अदब सां गॾु बशीर मंगी हिकु समाजी कारकुन ऐं तनज़ीम साज़ पिणु हो। हिन केतिरनि ई तनज़ीमनि में उहिदा संभालिया, जिन मां कुझु हीअ रहिता आहिनि। मर्कज़ी ऑडिटर सिंधी अदबी संगत 2010 खां 2013 ताईं, मेंबर रहीमदाद मौलाई शिदाई जो मेंबर में मौलाई शिदाई रहीमदाद, जनरल सेक्रेटरी अलफतह वेलफेयर यूनिट अलाहाबाद लाड़काणो 1980, सदर आल पाकिस्तान क्लर्क गुडू बराज यूनिट सखर 1995। इहे उहिदा संदसि समाजी तनज़ीम ऐं अदबी सलाहियत जो वाज़िया सबूत आहिनि। बशीर मंगी शाइरी, कालम नवीस, मज़मून निगारी ऐं
जी मैदान में पंहिंजी मुनफ़रद जाइ ठाहे छॾी हुई। संदसि तहरीरुनि में धरतीअ जी सुगंध, इंसानी दर्द ऐं फ़िक्र जी सचाई जा रंग नुमाया हुया। संदसि अहम किताब हिन तरह आहिनि: वॾो फड़ो हाइका 2004, संसार सिंध ऐं मुंहिंजी सोच कालमनि जो किताब 2011, मंटो जा 100 साल तर्जुमो 2012, पखी प्यार अमन जा अदबी सफ़रनामो 2020, पाणीअ जी खोट मजमू केर तो मूंखे सॼे शाइरीअ जो मजमू 2017, ख़ासि तौर ते मंटो जी तर्जुमे जे ज़रिए बशीर मंगी सिंधी अदब में आलमी फ़िक्र ऐं इंसानी नफ़्सियात जा नवां पहलू आंदा हा। 13 मई 2021 में बशीर मंगी हिकु वबा जी सूरत में हेरा हॉस्पिटल सखर में वफ़ात कई। 3 धीअरनि हिकु पुटु लतीफ़ ॾिनो मंगी ऐं असांजी भाॼाई खे छॾे हलियो वियो। उहो ईद जो ॾींहुं हो जंहिंमें मुंहिंजी अखियुनि में लुड़क तड़ी आया हा। उहो सॼो ॾींहुं मां लबे बिरान जी कंहिं कुंड में बिराज पुल जे नज़ारे जे साम्हूं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक खे ॾिसंदे पखियुनि जी ॿोलियुनि में ऐं तफ़री माण्हुनि जी नज़रुनि जो निशानो बणो रहियसि। आख़िर में शाह लतीफ़ जो बेत यादि अचे थो: अॼु न होता कनि में तालिब तवारिन, आदसी उथी विया मरियूं मुंहुं वारनि जे जीअ खे जियारनि से लाहौती लॾे विया। महिरबानी। ही हुया असांजा मोहतरम दोस्त शेख इरशाद साहब जन। ऐं हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अब्दुल लतीफ़ मंगी साहब जन खे त हू अचनि ऐं अची करे असां सां मोहतरम बशीर मंगीअ जूं यादगिरियूं वंडनि। मोहतरम अब्दुल लतीफ़ मंगी। स्टेज ते वेठल क़ाबिल एहतराम मुंहिंजा अयाज़ गुल साहब, मुमताज़ बुखारी साहब, कुझु साईं जन खे मां सुञाणा, कुझु खे न सुञाणा। हेठि वेठल मुंहिंजा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। हुकम मौजूद, चंद मौजूद। नवंबर जे शुरूआती ॾींहंनि में साईं अयाज़ गुल साहब कॉल कई, मंझंदि जो टाइम हुजे, प्रोग्राम जे बारे में साईं चयो त असां रखूं था। यकीन कयो त अखियूं आलियूं थी वियूं त 2021 में वालिद साहब इंतकाल करे वियो। उन खां पोइ एतिरे अरसे खां पोइ बाबा खे यादि कयो वियो आहे। साईं जन खे जी वॾी महिरबानी, आर्ट काउंसिल जी भी वॾी महिरबानी। साईं जन प्रोग्राम रखियो। बाबा जा जेके वेझा दोस्त रहिया उन्हनि बि एतिरो न कयो, ॾुख बि आहे। ऐं साईं अयाज़ गुल साहब एॾो बाबा जे वेझो बि न हुया। साईं जी तॾहिं बि महिरबानी प्रोग्राम मुंतक़िब कयो, रखियो। असांखे जॾहिं वालिद साहब वठी वेंदो हुयो कंहिं प्रोग्राम ते त अक्सर ब्लाइंड स्कूल में वेंदा हुआसीं। साईं मंज़ूर हुजण साहब हूंदो हुयो, उते प्रोग्राम थींदा त वालिद साहब चवंदो बाबा असां सां हलो। पोइ असांखे असां त अदब जे अलॻि खां वाबस्ता न आहियूं। असां छो अलॻि फील्ड हुई, बाबा जी अलॻि हुई। असांखे ॾाढी चई कोशिशि कयो अचो हिन फील्ड में अचो। असां चयोसीं त बाबा असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन पई अचे ऐं तव्हां बि पंहिंजो टाइम था ज़ाया कयो। ईअं मज़ाक में घर में वालिद साहब चवंदो हुयो बाबा हे तव्हांखे हाणे ख़बर न पवंदी, हे जॾहिं मां हलियो वेंदुसि पोइ तव्हांखे ख़बर त मां तव्हांखे छा ॾेई थो वञा, केॾी मिल्कियत ॾेई थो वञा। अॼु 2021 मई ईद जो ॾींहुं हुजे, सुबुह जो हेरा हॉस्पिटल में फ़ोनियूं आयूं त बाबा अचो एमरजेंसी आहे ऐं तव्हांखे वालिद साहब यादि थो करे। जीअं मां हुते पुॼां थो त मूंखे ॿुधाए थो वञे त तव्हांजा वालिद साहब एक्सपायर थी विया। उहे 3 ॾींहं टिजे ताईं ऐं बाक़ाइदे ॾिठोसीं वालिद साहब जीअं चयो त मां तव्हांखे मिल्कियत इहा ई थो ॾेई वञा, पंहिंजो इल्मु अथव, उहो नज़र आयो पए। दुबई मां फ़ोनियूं, अमेरिका मां फ़ोनियूं आयूं आहियूं, काफ़ी मुख़्तलिफ़ पंजाब जा माण्हू राब्ते में हुया। हुन पंहिंजी एतिरी राज रसाई कई हुई जो
अॼु 3 सालनि खां पोइ अॼु वरी प्रोग्राम ते अची ख़ुशी बि थिए थी त बाबा खे यादि कयो आहे। पर हिकिड़ो अर्ज़ु इहो बि कंदुसि त हर साल वरसी थिए, वरसी न त या ॿियो को ॾींहुं रखियो वञे, कुझु वेझा दोस्त को नाला न खणंदुसि, बसि सिर्फ़ु फ़ोन कंदा आहिनि त बाबा प्रोग्राम रखंदासीं, तव्हांखे हीअं कंदासीं, असां घुराईंदासीं, तव्हांखे डिस्टर्ब न कबो। बाबा सां मां उन्हनि खे वरी बि इहा मोट ॾींदो आहियां मां त बाबा तव्हां प्रोग्राम कयो, तव्हां फाइनेंशियली चओ, के बि सपोर्ट चओ, मां उन लाइ बि हाज़िर आहियां। पर हिकिड़ो जीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी, पंहिंजे ऑफिस खे टाइम ॾिनो, पंहिंजे इल्मु अदब खे टाइम ॾिनो, पंहिंजी औलाद खे पंहिंजी गुरबत में जेकी तालीम असांखे ॾिने, उनखे माना 7 किताब छपियल पंहिंजी सिंध लाइ ॾिने, उनखे एतिरो जल्दी विसारणु न खपे त बहितरु आहे। मां आख़िर में वरी बि अर्ज़ु कंदुसि त हर साल जीअं कंहिं बि फाइनेंशियली हिसाब सां, कंहिं बि सपोर्ट सां, पर विसारियो न वञे इहो प्रोग्राम, हर साल ईअं बाबा जो रखियो वञे त बहितरु आहे। वॾी महिरबानी। ऐं हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अनीसुर रहमान साहब जन खे त उहे अचनि ऐं अची करे मोहतरम नखत बरेलवी जे हवाले सां मकालो पढ़नि। मोहतरम अनीसुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ताज़ियत करते हैं मंगी साहब के अहले ख़ानदान बैठे हैं यहाँ, जागीरानी साहब के फ़र्जंद बैठे हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जागीरानी साहब की, मंगी साहब की और नकत बरेलवी साहब की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके उख़्रवी दर्जात बुलंद फ़रमाए। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए। साहिब सदर जनाब डॉक्टर मदली शाह साहब की इजाज़त से मोहतरम अयाज़ गुल साहब कन्वीनर अदबी कमेटी नूर रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और अदल साहब बैठे हुए हैं, सबकी इजाज़त से। तो मेरा टॉपिक है वो है नखत बरेलवी साहब। तो मैं आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ। उन्वान है मेरा कि नखत सखर नखत बरेलवी। अज़ीज़ हामिद मदनी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है और आप सबके इल्म में होगा और ये तीनों शख्सियत पर पूरा उतरता है जिनकी यादें ताज़ा की जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि वो लोग जिनसे तेरी बज़्म में थे हंगामे, वो लोग जिनसे तेरी बज़्म में थे हंगामे, गए तो क्या तेरी बज़्म ख़याल से भी गए। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग कभी फरामोश नहीं किए जा सकते जिनकी इल्मी व अदबी खिदमत तारीख़ अदब का एक अनमिट बाब बन चुकी हों और जो अपनी इंसान दोस्ती और रोशन ख्याली से आज भी जहनों के नया खानों, दिलों और किताबों में मौजूद हैं। सखर आर्ट्स काउंसिल में आज सखर की जिन मारूफ व मोतबर अदबी शख्सियात की यादें और बातें ताज़ा की जा रही हैं, उनमें ज़ुबान व अदब के नामवर शायर व अदीब, नस्र और तनकीद निगार नखत सखर मोहतरम नकत बरेलवी भी शामिल हैं। अज़ीम दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर आबाद तारीख़ी शहर सखर हर एतबार से तारीख़ी है और तारीख़ में इसका नुमाया मकाम इसका हक़ है। ये खूबसूरत और दिल नवाज शहर हर एतबार से बहर पहलू पुरकशिश तो है ही, लेकिन यहाँ पैदा होने और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके यहाँ बस जाने वाली मुतअद्दिद अबकरी शख्सियात ने भी इसकी फ़ितरी जाज़बियत में काबिल तवज्जो और तारीख़ी अहमियत में नुमाया इजाफ़ा किया है। यूँ कहा जा सकता है कि अगर सखर ने यहाँ पैदा होने और हिजरत के बाद आकर बसने वालों को इम्तियाज़ी शनाख्त दी, तो इन तमाम शख्सियात ने भी अपनी खुदादात सलाहियतों को बरूए कार लाकर सखर की कदर व मंजिलत को खूब बढ़ाया। मज़हब व रूहानियत हो, इल्म व अदब हो, सियासत व तिजारत हो, सहाफ़त हो या दीगर फ़नून में मुसव्विरी हो, ख़त्ताती हो, गुलकारी हो या अदाकारी, हर शोबे में सखर की महक शहर में, मुल्क भर में और मुल्क से बाहर दुनिया भर की फ़ज़ाओं में महसूस की जा सकती है। बिलख़ुसूस उर्दू और सिंधी ज़ुबानों के शेर व अदब से वाबस्ता शख्सियात ने बाहम मिलकर इस शहर की शोहरत को दुनिया भर में चार चांद लगाए। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद एक ज़माने तक सखर की हैसियत मरकज़ अदब के तौर पर मुस्तहकम रही और अब भी तारीख़ के औराक़ पर सखर की ये पहचान रोशन व पाइंदा है। उर्दू ज़ुबान के ऐसे ही सफ़े अव्वल के शायर नकत सखर हकीम सैयद इम्तियाज़ हुसैन नकत बरेलवी साहब भी हैं। नकत साहब ने कहा था, इस तरह क्या बेतसलसल देखने से फ़ायदा, इस तरह क्या बेतसलसल देखने से फ़ायदा, मुझको माजी से मेरे अहदे रवां तक देखिए।
ہم آج اس شعر کی روشنی میں نقد صاحب کے ماضی سے عہد دورہ تک کی موجودگی کی ایک جھلک دیکھیں گے، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد سکھر کے علاقے پرانے سکھر کو اپنا مسکن بنایا، شعر و ادب کی ہر مجلس کا حصہ بنے، اور پھر وہ نکہت جو بریلی ہندوستان سے سکھر پہنچی تھی، نکہت سکھر کے طور پر دنیائے ادب کی فضاؤں کو مسحور کرنے لگی۔ نکہت بریلوی صاحب کا اصل نام سید امتیاز حسین تھا، طب کے شعبے سے وابستہ تھے، مستند حکیم تھے۔ ان کے والد گرامی سید مقبول حسین صاحب بھی معروف و مستند حکیم تھے، اور پرانے سکھر کے شاہی بازار کے عقبی محلے میں اپنا مطب کرتے تھے۔ نکہت بریلوی صاحب کے والد کا تعلق بریلی سے تھا، لیکن ان کی والدہ یو پی انڈیا کے تاریخی شہر شاہجہان پور کی تھی۔ شادی کے بعد نکہت صاحب کے والد صاحب نے بریلی سے رخصت لے کر شاہجہان پور میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور اپنا مطب وہیں قائم کر لیا۔ نکہت صاحب کی پیدائش اور ثانوی درجے تک تعلیم بریلی کی تھی۔ والد کے شاہجہان پور منتقل ہونے پر نکہت بریلوی صاحب بھی شاہجہان پور آ گئے اور اسلامیہ انٹر کالج سے میٹرک کیا۔ لگ بھگ 15 سال کی عمر میں بہن کے پاس لاہور بھیج دیے گئے۔ یہ 1950 کا سن تھا۔ یہاں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی۔ ان کے والدین نے 1953 میں پاکستان ہجرت کی اور سکھر میں مستقل رہائش کا فیصلہ کیا۔ سکھر میں نکہت صاحب نے محکمہ صحت اور ایس ایم اے ہائی اسکول میں کچھ عرصہ ملازمت کی، لیکن والد چونکہ حکیم تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی حکمت کی تعلیم حاصل کر کے ان کا مطب سنبھالے، یوں انہوں نے والد کی خواہش کے پیش نظر ملازمت سے استعفیٰ دے کر سندھ طبیہ کالج حیدرآباد سندھ میں داخلہ لیا اور نیشنل کونسل فار طب کی 4 سالہ تعلیم مکمل کر کے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کے حصول کے لیے والد صاحب کے ساتھ پرانے سکھر میں قائم ان کے مطب میں بیٹھنے لگے۔ 1981 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد نکہت بریلوی صاحب نے اپنے والد صاحب کے مطب کو سنبھالا۔ نکہت صاحب سکھر میں 34-35 سال مقیم رہے اور یہیں سے اپنے خاندان کے پہلے شاعر و ادیب کی حیثیت سے شعر و ادب کی دنیا میں عملی قدم رکھا اور وہ خدمات انجام دیں جو ادبی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ جب ادبی تاریخ دہرائی جائے گی تب نکہت صاحب سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ شعر و ادب کا شوق تو انہیں زمانے طالب علمی سے ہی تھا، اور جس شہر شاہجہان پور میں ان کی پرورش ہوئی وہ شعر و ادب کا گہوارہ تھا، جہاں اپنے وقت کے کئی ایک نامور اساتذہ فن شعر و ادب کی ترویج میں مصروف تھے۔ نکہت بریلوی صاحب اپنے مجموعہ کلام حرف زیر لب کی طباعت اول جنوری 2002 کے صفحہ 159 پر حرف تشکر کے عنوان سے اپنی تحریر میں لکھتے ہیں: ادب سے دلچسپی تو اردو مڈل کے دوران تعلیم پیدا ہو گئی تھی، لیکن مطالعے میں زیادہ تر نثری ادب رہا۔ شاعری سے واجبی سا تعارف نصاب کے حوالے سے تھا۔ اس سے رغبت شاہجہان پور میں ہوئی، جہاں شاعری کا چرچا عام تھا۔ چھوٹی عمر اور بڑی عمر کے 20 شاعر تھے۔ کئی اساتذہ بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ نمایاں نام اور مقام حکیم ضمیر حسن خان دل شاہجہان پوری کا تھا، جو منشی امیر منائی کے جانشین اور اعتبار الملک کے خطاب سے متصف تھے۔ ان کے علاوہ مولانا اسد شاہجہان پوری اور دل کے شاگرد رشید شاہجہان پوری بھی اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ ہر استاد کے شاگرد مقامی سطح کا مشاعرہ بھی کل ہند سطح کے مشاعرے کے معیار اور شان میں کم نہ ہوتا تھا۔ فضا مچیٹی کسی ہوتی، لیکن مجال ہے کہ مشاعرے کے نظم و ضبط میں خلل پڑے یا آداب مجلس متاثر ہوں۔ ایک دو بار ہم جماعت دوست مبارک علی خان ان مشاعروں میں اپنے ساتھ لے کر گئے، پھر چسکا پڑ گیا اور خود جانے لگا۔ ان مشاعروں کو سنتے سنتے شعر کہنا شروع کر دیا۔ کئی طرح پر غزلیں کہیں، لیکن مشاعروں میں سنانے یا دوستوں کو بتانے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ اسی صفحے پر وہ مزید لکھتے ہیں کہ تخلیقی زندگی کا باقاعدہ آغاز سکھر میں 1954 سے ہوا۔ اس کو اب 48 سال ہو چکے ہیں۔ نکہت بریلوی صاحب خاموش طبع تھے اور محدود زندگی گزارنے کے باوجود مجلسی انسان تھے۔ ان کے لہجے میں نرمی، دھیما پن اور شائستگی تھی، جبکہ شخصیت میں شرمیلا پن جھلکتا تھا۔ وہ نمود و نمائش سے دور اپنی دنیا بسائے بہت خوش تھے۔ وہ ادب میں ترقی پسندانہ رجحانات کے حامل تھے۔ ان کی خوش قسمتی جو انہیں بہت مخلص دوست میسر آئے، جنہوں نے ان کے شرمیلے پن کو دور کیا۔ ان کے پہلے اور آخری مجموعے کلام حرف زیر لب کی اشاعت بھی نکہت صاحب کے قریبی دوست اور ممتاز شاعر حمایت علی شاعر صاحب کی تحریک کی ہی مرہون منت ہے۔ حتیٰ کہ مجموعے کا نام بھی جو نکہت صاحب کی خاموش طبیعت اور مسکراہٹ کا عکاس ہے، یعنی حرف زیر لب، اور جسے پڑھ کر نامور و معروف شاعرہ پروین شاکر کا یہ شعر ذہن میں آ جاتا ہے: جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے، جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے، میں اس کی بزم میں ایک حرف زیر لب بھی نہیں۔ اور اسی غزل کا ایک شعر ضمناً
پیش کرتا ہوں کہ حساب پروین شاکر کا شعر کہ حساب در بدری تجھ سے مانگ سکتا ہے غریب شہر مگر اتنا بے ادب بھی نہیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ حمایت صاحب نے یہ نام ان کی شخصیت و مزاج کی مناسبت سے ہی منتخب کیا ہو اور اس وقت ان کے ذہن میں پروین شاکر کا شعر بھی گونج رہا ہو۔ حمایت صاحب اسی مجموعے میں صفحہ 25 پر شامل اشاعت سرونا شاعر کے عنوان کے تحت اپنے مضمون میں نقد صاحب سے پہلی ملاقات، تکلف سے بے تکلفی تک کے سفر اور پھر مجموعے کی ترغیب دینے کا احوال اس طرح بیان کرتے ہیں۔ 1953 کی ایک رات تھی، شہر تھا سکھر اور مقام تھا دریائے مہران کا کنارہ۔ میں خالد علی و خمار انصاری کے ساتھ ایک مشاعرے کے سلسلے میں کراچی سے وہاں گیا ہوا تھا۔ اب جن نوجوانوں کے درمیان تھا وہ میرے لیے سب اجنبی تھے۔ آفاق صدیقی، مہر الہی شمسی، حسن حمیدی اور نکہت بریلوی، جو ان سب میں کم عمر تھا۔ یہ چار یار تھے جو سکھر میں سندھی اردو ادبی کانفرنس منعقد کیے ہوئے تھے۔ حمایت صاحب مزید لکھتے ہیں، سانولا سرونا نوجوان پرکشش تو ہے مگر بولتا نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے بے تکلف ہو جائے۔ نکہت میں بعض خوبیاں ایسی ہیں جو اس دور میں کم نظر آتی ہیں۔ ایک تو خود نمائشی سے گریز، جس کے نتیجے میں آج تک اس کی کوئی کتاب شائع نہیں ہو سکی، حالانکہ اس کا تعلق ہمیشہ اخبارات، رسائل اور مجلسی زندگی سے رہا ہے۔ سکھر کی بڑی بڑی ادبی کانفرنسوں اور مشاعروں کے انعقاد میں ہمیشہ اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگر اس کے مزاج میں سطحیت ہوتی تو وہ انہی کو اپنی شہرت کا وسیلہ بنا لیتا اور کم از کم سندھ میں سر فہرست نظر آتا۔ حمایت صاحب طویل مضمون میں ادبی تاریخ لکھتے جاتے ہیں اور ایک مقام پر کہتے ہیں، عرصے تک نکہت کی اعانت کلیم کو حاصل رہی، بالخصوص مہر الہی شمسی نمبر ایک یادگار بن گیا۔ اس طرح ماہنامہ افکار میں صحبہ لکھنوی اور محمد علی صدیقی کی رفاقت میں 50 سالہ افسانہ نمبر، منظومات نمبر اور مضامین نمبر بھی نکہت کے کارنامے ہیں، اور سب سے بڑا کارنامہ اس کی کتاب صحبہ لکھنوی شخصیت اور ادبی خدمات ہے۔ یعنی وہ فرض جو رفیقان افکار پر قرض تھا بالآخر نکہت بریلوی نے اتار دیا۔ اسی مضمون میں حمایت صاحب لکھتے ہیں کہ نکہت نے احباب کے لیے ایسے کئی یادگار کام کیے اور اپنا کوئی کام نہ کیا۔ اس کی روش پر مجھے مجاز کا شعر یاد آتا ہے، سب کا تو مداوا کر ڈالا اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کا تو مداوا کر ڈالا اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ حمایت صاحب نے نکہت بریلوی کا بکھرا ہوا کام ہی نہیں بلکہ ان کے کالم اور مختلف شخصیات پر ان کے لکھے مضامین بھی تلاش کر کے انہیں دیے اور چھپوانے پر اصرار کرتے رہے، مگر وہ گریز ہی کرتے رہے۔ تاہم بعد میں نکہت صاحب کے صاحبزادوں کے کہنے پر انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے کلام پر مشتمل مجموعہ شائع کروائیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ نکہت صاحب نے خاکہ نگاری میں بھی کمال حاصل کیا اور ان کی کتاب خاکوں پر بھی آنے والی تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھپنے سے روک دیا تھا۔ اب مسئلہ نام کا تھا۔ مجموعہ چھپوانے کی خوشخبری کے ساتھ ہی نکہت صاحب ایک روز حمایت صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے اپنے مجموعے کا نام رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حمایت صاحب نے خوشی کے اظہار کے ساتھ کچھ دیر سوچا اور نام تجویز کیا، حرف زیر لب۔ نکہت صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ حجاب سا ہے، لیکن حمایت صاحب نے کہا یہی تو تمہاری شاعری کی پہچان ہے، اور نکہت صاحب کو ان کا مطلع یاد کرایا، احوال دل کسی سے بھی کھل کر نہیں کہا، احوال دل کسی سے بھی کھل کر نہیں کہا، جتنا کہ اضطراب تھا اندر نہیں کہا۔ نکہت بریلوی صاحب سنجیدہ مزاج شاعر، خاکہ نگار، نقاد اور ادبی کالم نگار تھے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر مستند ادبی جرائد میں ان کا کلام اور مضامین شائع ہوتے رہے۔ ترقی پسند اور روشن خیال انسان تھے، منکسر المزاجی ان کی شخصیت کا خاص وصف تھا۔ سکھر میں جہاں ان کے تعلقات حکیم شمس الحسن اختر، آفاق صدیقی، حسن حمیدی، مسلم شمیم، علی شوکت آبدی، مظہر جمیل، شیخ ایاز، حسن اکبر کمال، مہر الہی شمسی، رضوان اللہ خان، نجم الحسن رضوی وغیرہ سے تھے، تو وہیں حکیم ادریس شمیم، ڈاکٹر سردار احمد خان، عزیز جبران انصاری، ڈاکٹر تاج الدین صدیقی، صوفی پیر عطا اللہ خان قادری، وفا بریلوی، رفیق خاکی، حافظ رشید، رحمت روحیلہ اور دیگر شخصیات سے بھی تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر سردار احمد صاحب، حکیم ادریس شمیم صاحب، پروفیسر عزیز جبران صاحب اور ہمارے والد صاحب کا تعلق بھی شاہجہان پور سے تھا۔ اس طرح وہ تعلق
اور یہاں ایک ہی علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے یہ محبتیں مزید مستحکم تھیں، اور یہی وہ تعلق تھا کہ نکھت صاحب نے اپنی صحت مندی اور طویل بیماری میں جب بھی ہمیں خط لکھے تو عذرائے محبت و انسیت میرے بھتیجے لکھ کر مخاطب کیا، ہم بھی انہیں ہمیشہ چچا ہی کہا کرتے تھے۔ جنوری 2002 میں شائع ہونے والا مجموعہ حرف زیر لب اپنائیت کے اظہار کے ساتھ ہمیں بھیجا اور تبصرے کا حکم بھی صادر کیا، جس کی ہم نے تعمیل کی۔ پھر یہی مجموعہ کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ جب جنوری 2008 میں دوسری بار اشاعت پذیر ہوا تو اس سے بھی نوازا۔ بیرون سکھر اور بیرون ملک کی اہم ادبی شخصیات نکھت صاحب کی شعر و ادب میں قدر و قیمت سے واقف تھے اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ ممتاز شاعر احمد ندیم قاسمی نے کہا، نکھت بریلوی ان غزل گو شعراء میں شامل ہیں جنہیں عصر حاضر کے سخنوروں میں اہم درجہ حاصل ہے۔ نکھت بریلوی کا اسلوب غزل گوئی ہی مستقبل میں بھی صنف غزل کو تابندہ اور پائندہ رکھے گا۔ ڈاکٹر قمر رئیس نکھت صاحب کے لیے لکھتے ہیں، نظم ہو یا غزل، نکھت بریلوی کا شعری آہنگ حرف زیر لب سے آگے نہیں بڑھتا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اندر ہی اندر چپکے سے اپنے وجود کی سیاحت کر رہے ہوں۔ خلیق لکھتے ہیں، سکھر میں اردو سندھی زبانوں کے شعر و ادب کے ذوق کو پروان چڑھانے اور دونوں زبانوں کے اہل قلم ادیبوں اور شاعروں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مشترکہ ادبی تقریبات کے انعقاد میں نکھت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی لکھتے ہیں، سکھر سندھ کا پرانا تہذیبی شہر ہے۔ اس شہر کے متعدد ادیب اور دانشور بلا لحاظ مذہب بر صغیر کی مشہور شخصیات میں شمار ہوتے آئے ہیں۔ سکھر میں نکھت بریلوی اور ان کے رفقا نے اردو شاعری اور ادب کی ترویج، ترقی اور اشاعت کے لیے بہت کوششیں کیں۔ سکھر سے سبھی کی طرح نکھت صاحب کو بھی بہت محبت تھی، لیکن 1986 میں اہل خانہ کی اصرار پر مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گئے، جہاں وہ مختلف رسائل سے وابستہ رہے۔ نکھت صاحب کے 5 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہیں، سید مسعود افروز، سید مسعود عرفان، سید مسعود سلمان اور دیگر اہل خانہ کراچی مقیم ہیں، جبکہ ان کے ایک فرزند سید مسعود جبران مہروز اب دنیا میں نہیں۔ ان کی 2 بیگمات تھیں، ایک سیدہ عابدہ پروین، سیدہ عابدہ زریں جو گھریلو خاتون تھیں لیکن ادب کا ذوق رکھتی تھیں، اور دوسری بیگم ان کی تھیں نجمہ امتیاز جو لیکچرر تھیں اور بعد میں وہ پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئیں اور انہیں درس و تدریس کے حوالے سے کئی کتب تصنیف کیں۔ 12 مئی 1935 کو بریلی میں پیدا ہونے والی نکھت بریلوی کراچی میں ہی طویل بیماری کے سبب 26 نومبر 2022 کو اپنی خوبصورت شاعری اور نثری سرمایہ چھوڑ کر دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے اور کراچی میں ہی آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کے اخروی درجات بلند فرمائے، آمین۔ آخر میں نکھت صاحب کے تن منتخب اشعار آپ کے ذوق سماعت کی نظر۔ ادب تماشا ہے کیا کیا نہ آسمان سے لوگ، ادب تماشا ہے کیا کیا نہ آسمان سے لوگ، مثال گرد تیری رہ گزر میں رہتے ہیں۔ کسی سے کیا کوئی شکوہ کریں کہ سب فتنے، کسی سے کیا کوئی شکوہ کریں کہ سب فتنے، ہمارے اپنے ہی دیوار و در میں رہتے ہیں۔ یہ دونوں اشعار غالباً 1980 کے اوائل میں ہمارے گھر میں ارباب قلم شاخ سکھر کے زیر اہتمام منعقدہ طرحی مشاعرے میں نکھت صاحب کی پیش کردہ غزل کے ہیں، جو ہمارے والد صاحب کی ذاتی کوششوں سے اور میزبانی میں اس قدر شاندار طریقے سے منعقد ہوا تھا کہ سکھر کی تمام انجمنیں اپنے ارکان کے ساتھ اس میں شریک تھیں، اور سکھر میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ جبران صاحب نے اس طرح ہی مشاعرے کی خبر سرخی کے ساتھ شائع کی تھی۔ اس مشاعرے پر دلی اور لکھنؤ کے مشاعروں کا گمان۔ ان کے اور اشعار ہیں کہ ہم نے وہ زیر لب صحیح حرف با حرف لکھ دیا، ہم نے وہ زیر لب صحیح حرف با حرف لکھ دیا، یعنی امیر شہر کا جو بھی تھا ظرف لکھ دیا۔ تیرے خیال کی شمع جلا کے ہجر کی شب، تیرے خیال کی شمع جلا کے ہجر کی شب، ہم اپنے آپ سے اکثر کلام کرتے رہے۔ یہ عہد شعر دیکھیے کہ یہ عہد کم نگہی دور نارسا ہے یہاں، یہ عہد کم نگہی دور نارسا ہے یہاں، کسی سے کیا خلش دل پہ گفتگو کرتے۔ چند شعر ان کے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں تاکہ آپ سے مکمل تعارف ہو جائے نکھت صاحب کا کہ تیرے سوا بھی اور بہت کچھ کہا تو ہے۔
تیرے سوا بھی اور بہت کچھ کہا تو ہے، لیکن تیرے خیال سے بچ کر نہیں کہا۔ دلوں کے داغ ہی لو دے اٹھیں ذرا نکھت، کوئی غزل ہی سناؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ہمیں دلوں کے داغ ہی لو دے اٹھیں نکھت، کوئی غزل ہی سناؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اور ہمیں بھی رات کو دن کہنا آتا جاتا ہے۔ شعر دیکھیے گا، ہمیں بھی رات کو دن کہنا آتا جاتا ہے کہ ہم بھی حامل آداب ہوتے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا طنز ہے معاشرے پر کہ ہمیں بھی رات کو دن کہنا آتا جاتا ہے کہ ہم بھی حامل آداب ہوتے جاتے ہیں۔ سکھر سے اپنی وابستگی اور محبت کا اظہار وہ اس انداز سے کرتے ہیں، وہ یار احباب وہ ماحول اکثر یاد آتا ہے، وہ یار احباب وہ ماحول اکثر یاد آتا ہے۔ ہماری یاد تو شاید ہی آئے اہل سکھر کو، ہمیں تو رات دن رہ رہ کے سکھر یاد آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکھت صاحب آپ کو کوئی نہیں بھولا اور نہ ہی بھولے گا، اور آج کی یہ تقریب آپ کو یاد کر رہی ہے، آج آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی زندہ جاوید شخصیت کی عکاسی ہے۔ ہم ان کے اہل خانہ کی جانب سے محترم ایاز گل صاحب کا، محترم ممتاز بخاری صاحب کا، سکھر آرٹس کونسل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ ان کی طرف سے شکریہ ادا کر دیا جائے کہ آج ان کے والد کی یاد یہاں پر تازہ کی جا رہی ہے۔ آج کی تقریب کے لیے سکھر آرٹس کونسل کے ادبی کمیٹی کے کنوینر محترم ایاز گل صاحب نے ہمیں جب فون کیا کہ کسی اردو شاعر پر آپ مضمون پڑھیں، تو ہم نے فوراً نکھت صاحب کا نام پیش کیا اور مضمون لکھنے کی حامی بھر لی کہ ان کی شخصیت اور ادبی خدمات ہر اعتبار سے یاد رکھے جانے کے لائق ہیں۔ نکھت صاحب کی اس شعر کے ساتھ، سحر قریب ہے لیکن سحر کے مت والو، سحر قریب ہے لیکن سحر کے مت والو، ابھی دیے نہ بجھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ہم نکھت بریلوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کرنے پر آرٹس کونسل کے صدر ممتاز بخاری صاحب، تمام عہدیداران اور ادبی کمیٹی کی کنوینر محترم ایاز گل صاحب اور تمام اراکین کے بے حد شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں۔ یہاں انہیں چاہیے ہوتا ہے سلیقہ ہی نہیں اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ ہانے ماں گزارش کندس محترم نور رضوی صاحب جن کے تو اچھی کرے محترم غلام مرتضیٰ خان جاگیرانی کے حوالے سے پنجو مقالو پیش کن۔ محترم نور رضوی صاحب۔ مہربانی پیارا مونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر سائیں مدد علی شاہ صاحب، وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد، سائیں ممتاز بخاری صاحب صدر آرٹس کونسل، سائیں ایاز گل صاحب کنوینر ادبی شعبو، عدل سمرو صاحب سیکریٹری جنرل، سائیں اختر درگاہی صاحب، بیا دوست جے کے ساموں بیٹھا ہیں، سبنی کے سلام عرض۔ ہکڑی وضاحت ऐं معذرت तव्हां खां कंदुसि۔ एतिरी ज़िंदगी थी वई आहे، मां स्टेज ते कॾहिं बि लिखियलु पेपर न आहियां पढ़ियो। हमेशह जो कुझु बि अर्ज़ु कंदो आहियां थोरो थको फिलबदी कंदो आहियां। हीउ पहिरियों दफ़ो आहे, सो ऊच नीच थी वञे त बसि तव्हां खां अॻुवाट माज़रत। जसो जे सखर आर्ट्स काउंसिल ख़ासि करे अदबी शोबे खे जंहिं विछड़ी वियल उर्दू ऐं सिंधी अदीबनि ऐं शाइरनि खे भेटा पेश करण जो एहतमाम कयो। अॼु असां हिकु अहिड़ी हस्तीअ जे हवाले सां गुज़ारिश पेश कंदासीं जेको हिकु माहिर तालीमदान, उस्ताद, सुठो शाइर, बहितरीनु इंसान त हुयो ई, पर हुन मौज़ून शाइरीअ जे हवाले सां उत्तर सिंध में ख़ुसूसन हिकु अहम किरदारु अदा कयो। मुंहिंजी मौज़ूई शख़्सियत आहे जनाब मरहूम ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जागीरानी साहब। सिंध जे सरमोड़ सूफ़ी बुज़ुर्ग ऐं शाइर हज़रत रोहल फ़क़ीर जे शहर कंडड़ीअ जे पाड़े में ॻोठु लुत्फ़ अली जागीराणीअ में ख़ान साईंअ जे बकोल 1940 में
ऐं सरकारी रिकॉर्ड मुताबिक़ 1942 में संदन जनम थिए थो। इलाइक़े जे हिकिड़ी निहायत मुअज़्ज़ज़ शख़्सियत शहबे ख़ान जागीराणीअ जे घर में। ग़ुलाम मुर्तज़ा जागीराणी प्राइमरी तालीम पंहिंजे ॻोठ मां हासिलु करण बाद अंग्रेज़ी तालीम लाइ मुमताज़ कॉलेज ख़ैरपुर मां सन 1957 में मैट्रिक पास कई। BA इस्लामिया कॉलेज सखर मां 1962 पास करे 1966 में तालीम खाते सिंध में HST तौरु भर्ती थिया। 1972 में एजुकेशन ऑफिसर तौरु ग्रेड 19 में संदन तकरूरी थी। शाइरीअ जी शुरूआति ख़ान जागीराणी साहब 1979 खां कई। नामियारे अदीब ऐं शाइर अब्दुल रज़ाक राज़ खां इल्म अरूज़ जी इब्तदाई सिखिया वरिती। हिते लफ़्ज़ अरूज़ अची वियो आहे त मूंखे दिलि चए थी त इन लफ़्ज़ खे ॾाढो ग़लति इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। असां वटि उरूज़ चयो वेंदो आहे, जेको असल में ग़लति आहे। इहो लफ़्ज़ आहे अरूज़, ऐं इन ते ज़बर सां। उन अरसे दौरान संदसि मुक़ररी कंधकोट में बतौर SDO थी, जिते ग़ालिब सिंध फैज़ बख्शापुरीअ सां संदसि घणी सोबत रही, जंहिं वटां खेसि शाइरीअ जे हवाले सां घणी रहनुमाई मिली। इहो तालुक़ु लाॻीतो 8 साल रहियो, जंहिं मां ख़ान जागीराणीअ खे मौज़ून शाइरीअ जे हवाले सां घणो कुझु सिखण जो मौक़ो मिलियो। 1980 में जैकबाद में थियल हार्स एंड कैटल शो में पहिरियों दफ़ो आल पाकिस्तान सिंधी उर्दू मुशाइरे में शिरकत जो खेसि मौक़ो मिलियो ऐं संदसि शाइरीअ खे सहारो मिलियो। फैज़ बख्शापुरीअ जी सोबत में संदसि तबियत ग़ज़ल ॾांहुं राग़िब थी ऐं घणो करे संदसि शाइरीअ में ग़ज़ल ई नज़र अचे थो। उन्हनि ॾींहंनि में कंधकोट जे नामियारे शाइर अज़हर गिलानीअ जे फ़र्ज़ंद सैयद नियाज़ अली शाह उर्फ़ मुर्शिद गिलानी कंधकोट में रहंदो। अज़हर गिलानीअ जो तालुक़ु त घोटिकीअ सां हुयो। मुर्शिद गिलानी साहब हिकु हफ़्तेवार अख़बार सफ़दर जे नाले सां जारी कई, जंहिंमें ख़ान जागीराणी साहब जी शाइरी अक्सर छपजंदी रहंदी हुई। अहिड़ी तरह ख़ान ऐं मुर्शिद हिक ॿिए जे क़रीब आया। 1995 में ख़ान जागीराणी साहब डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन तौरु सखर बदिली थी आया ऐं इत्तफ़ाक़न मुर्शिद गिलानी बि कंधकोट छॾे अची सखर वसायो। उन्हनि ॿिन्ही शख़्सियतुनि गॾिजी हिकु अहिड़ी अदबी तंज़ीम जोड़ी, जंहिं मौज़ून शाइरीअ खे हथी ॾिनी ऐं बेशुमार शाइरनि खे बि मौज़ून शाइरीअ जे तरफ़ माइल कयो, जेके अॻु में मौज़ून शाइरीअ ऐं तरही शाइरीअ खां ॿिन दूर दूर गुज़ारींदा हुआ। जॾहिं सखर में कुझु दोस्तनि ख़ान जागीराणी ऐं मुर्शिद गिलानीअ जे इसरार ते अहिड़ी तंज़ीम जो पायो विझण जो सोचियो त मुख्य मसइलो उथियो त उन तंज़ीम खे कहिड़ो नालो ॾिजे ऐं कीअं उनखे रजिस्टर्ड कराइजे। कंहिं चयो त अॻु में ई सिंधी अदबी संगत पंहिंजे पूरे उरूज ऐं करो फ़र सां पूरी सिंध में मौजूदु आहे। बहरहाल उन तंज़ीम जो नालो मुतफ़िक़ा तौरु तय थियो लतीफ़ अदबी तंज़ीम, जंहिंजो मुख़फ़िफ़ लात जे नाले सां मशहूरु थियो। ऐं मां हिते इहो बि ॿुधाईंदो हलां त इहो नालो तजवीज़ करण वारो असांजो मरहूम दोस्त ऐं नामियारो वकील ऐं शाइर साईं सचल सरफ़ाई हो। उन तंज़ीम खे बाद में बाक़ाइदा रजिस्टर्ड करायो वियो ऐं मुर्शिद गिलानी उनजो सदर मुक़ररु थियो ऐं सरपरस्त आला ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जागीराणी जन थिया। उन तंज़ीम तरही मुशाइरनि जो हिकु ज़बरदस्त सिलसिलो शुरू कयो ऐं सॼी सिंध में सवनि जे तादाद में तरही मुशाइरा मुनक़द कराया, जंहिंमें सिंध जे कुंड कुड़छ मां शुरा हज़रात बि शरीक थिया ऐं पंजाब जे सराइकी बेल्ट जा बि कुझु शाइर बाक़ाइदे सां उन तरही मुशाइरनि में शिरकत करणु लॻा। उन तंज़ीम जे तरही मुशाइरनि जे तुफ़ैल ई मुर्शिद गिलानी ऐं ख़ान साईंअ सां मुंहिंजी वेझड़ाइप थी, जेका बाद में हिकु पकी पुख़्ती दोस्ताणे तालुक़ में तब्दील थी। ख़ान साहब जे ख़ानदान सां हूअं त असांजे वॾनि खां वठी तमामु सुठो दोस्ताणो तालुक़ु रहियो। उनखां अलावा संदसि चाचे अली हसन ख़ान ऐं सूबल ख़ान ऐं SSP नज़ीर ख़ान सां बि राकम जा सुठा तालुकात रहिया।
1999 में पहिरियों दफ़ो लात जे प्लेटफार्म तां अशराए मुहर्रम जे प्रोग्राम में तरही महफ़िल मुसाल में शिरकत जो मौक़ो मिलियो, जंहिंजी सदारत या इहो महफ़िल मुसाल मां पन्नो आकल में थियो, जंहिंजी सदारत मूंखे ॾिनी वई ऐं माना तो अख़्तर दरगाही उन जो महिमान ख़ासि हुयो। उन मुशाइरे में मां उन्हनि मुशाइरनि में कराचीअ खां सीड़ जी शरीक थींदो हुयुसि, जंहिंजो ज़िक्र ख़ान साहिबु पंहिंजी किताब में बि कयो आहे। उन खां अलावा लात जे एज़ाज़ी सरपस्तीअ जे एज़ाज़ सां बि नवाज़ो वियो। ख़ान साईं जी रहाइश रिटायरमेंट खां पोइ रोड़ीअ में थी। अहिड़ीअ तरह फ़न सां वेझड़ाइप ते अक्सर मुशाइरनि में मूंखे पाण सां गॾु वठी वेंदा हुआ। संदसि नाले में तख़ल्लुस ख़ान ज़रूरु शामिलु हुयो, पर हुन में ख़ाननि वारी का बि ॻाल्हि कान हुई, बल्कि हू अक्सर उन्हनि नाम निहाद ख़ाननि ऐं भोतारनि जे रवैये ते तनक़ीद कंदो रहंदो हो। हीअ हाल अहवाल हू मूंसां मुख़्तलिफ़ शहरनि जे सफ़र दौरान कंदो हो, जिते असां ॿिन्ही खां सवाइ संदसि फ़र्ज़ंदनि मां बि घणो करे अली जागीराणी साहिब जन गॾु हूंदा हुया। ख़ान जागीराणी कॾहिं बि पाण खे को वॾो शाइर न सम्झो। तोड़े जो संदसि शाइरी काफ़ी पकी पुख़्ती अरूज़ जे बुनियादी ऐं सुहिणे तख़यल ते बीठल हूंदी हुई, पर हू इज़हार कंदो हो त दोस्तनि ऐं शाइरनि सां मुलाक़ात जे बहाने बनाइण लाइ मां बि शाइर थी वियो आहियां। हू अक्सर पंहिंजे शाइरीअ में ख़ान ख़िदमतगार जी तरकीब इस्तेमालु कंदो हो, जेका संदसि आजिज़ी ऐं इनकसारीअ जो ओञाण हुई। संदसि ही ॿ शेर उन ई जज़्बे जो इज़हार आहिनि। पाण चए थो त भल ज़मानो ख़ान पियो मूंखे सॾे, भल ज़मानो ख़ान पियो मूंखे सॾे, आजिज़ी दर दिलरुबा रहंदी अचे। ॿिए हंधि चयाईं त वॾाईअ खपाया केई ख़ान हितड़े, वॾाईअ खपाया केई ख़ान हितड़े, मां नौकर मां बानो मां गोली सॾायां। ख़ान पंहिंजे अंदर जे अना खे ऐं तकबुर खे आईनो ॾेखारे चवे थो, आहे मुफ़्ती मन में वेठल, काश को उन खां पुछे, नेक रोशन थी पवे मुंहिंजी हक़ीक़त पाण ते। ख़ान जागीराणी मौज़ून शाइरी कई ऐं तक़रीबन हर मौज़ूअ खे पंहिंजे सुखनवरीअ सां सींगारियो। उहो हमद हुजे, नात, मनक़बत या सलाम, बाक़ी मजाज़ी इश्क़ त संदसि फितरत में शामिल हो। उन करे संदसि रोमान ऐं महबूब जी तारीफ़ त संदसि अक्सर शाइरीअ में रचियल आहे। ख़ान अल्लाह ताला जे तौहीद ते रासिख़ अक़ीदो रखंदड़ शख़्स हो, जंहिंखे पंहिंजे मालिक ते मुकमिल भरोसे ऐं यकीन सां गॾु उन ई ज़ात खे हाजत रवा सम्झंदे चवे थो, मां त हाजतमंद तूं हाजत रवा मुंहिंजा ख़ुदा, मां त हाजतमंद तूं हाजत रवा मुंहिंजा ख़ुदा, तूं ई आणी तूं ई टारी थो कज़ा मुंहिंजा ख़ुदा। तौहीद ख़ुदाबंदीअ सां गॾु इश्क़ रसूल नबी आख़िर ज़मान में सरशार थियल नज़र अचे थो। फरमाए थो त ग़मज़दन मायूस दिलनि जो सहारो आ रसूल, रोज़े महशर हर बशर जो उत सहारो आ रसूल। ख़ान साईं जो ताल्लुक़ अगरचे अहले सुन्नत सां हो, पर हू कट्टरपणे खां बिन दूर इंतहाई रवादारी ऐं मुतदिल मिज़ाज रखंदो हो। हिन जे दोस्तनि में खोड़ सारा अहले तशय्युअ बल्कि गैर मुस्लिम बि हुया। पाण बि आले रसूल ख़ुसूसन इमाम हुसैन ऐं शोदाए करबला जो दिलि सां मोतक़द हो। चए थो त मुमकिन यकीन आहे करे हमसरी कोई, मुमकिन यकीन आहे करे हमसरी कोई, मेराज इश्क़ माणियो शहे करबला फ़क़त। उन खां अलावा अयाम अज़ा में हर साल लात जे तरफ़ां महफ़िल मुसालमा जा तरही मुशाइरा ऐं उन्हनि में ख़ान जे सदारती ख़िताब ऐं शाइरी खेसि आले रसूल जो सचो आशिक़, मुहिब ऐं मोतक़द साबित कयो। उन दौर जा 3 अदद मिसरा तरह ज़हन में अचनि था। हिकिड़ो मिसरा तरह हुयो त असग़र जे कयूं यादि पिया तशना लबीअ खे। ॿियो मिसरा तरह हुयो त ॿुधी करबो भला जो दास्तां कांडार जन था लिंग। टियों मिसरा तरह हुयो त अॼु वरी दुनिया खे थी तुंहिंजी ज़रूरत आ हुसैन। साहिब तरह त यादि नथा अचनि, पर ख़ान साईं जा शहर ऐं सदारती ख़िताब उन्हनि पाक हस्तनि खे बहितर ख़िराज अक़ीदत जा गुल अर्पींदड़ हुआ।
ख़ान दोस्तनि सां मिलण लाइ मुशाइरनि जो बेक़रारीअ सां इंतज़ारु कंदो हो। चवे थो त दोस्तनि सां पिणु मुलाक़ातूं थियनि थियूं ओचितो, दोस्तनि सां पिणु मुलाक़ातूं थियनि थियूं ओचितो, रंग लातो वाह जो मुर्शिद जी आ तंज़ीम लात। जमियत शोराए सिंध खां पोइ लतीफ़ अदबी तंज़ीम वाहिद प्लेटफार्म हुयो जंहिं तरह ई मुशाइरनि खे हथी वठराई। ख़ान जागीराणी मिसरा तरह खे हीअं थो बयानु करे त क़ौम तोड़े फ़र्द खे घुरिजे सदा पंहिंजी सुञाण, क़ौम तोड़े फ़र्द खे घुरिजे सदा पंहिंजी सुञाण, लात जो बणिजी वियो आहे निशान मिसरा तरह। इंसान जे मजबूरियुनि जो ज़िक्र कंदे फ़रमाए थो आज़माइश जूं घड़ियूं आसान कर, एहसान कर, ज़िंदगीअ जा था कठिन थींदा वञनि लम्हात हाण। ख़ान जे शाइरीअ में कंहिं बि ॿिए माॻ जो ज़िक्र घटि थो मिले, पर पंहिंजे ॻोठ कंडड़ीअ खे हिन ज़रूरु यादि रखियो आहे। चवे थो सहारे तुंहिंजे ऐं साईं अची आबाद हिते थियासीं, सहारे तुंहिंजे ऐं साईं अची आबाद हिते थियासीं, ख़ुदाया ख़ान खे ग़ैबी ॾिजो आधार कंडड़ीअ में। ख़ान जागीराणीअ जे अंदर में जेको शाइर लिकियलु हो उहो संदसि अधु वही यानी 40 सालनि जी उमिरि में कंहिं मजाज़ी इश्क जे चोट सबबु उभिरी आयो ऐं पोइ हिन पुठिते वराए न ॾिठो, मुसलसल लिखंदो रहियो। संदसि इश्किया शाइरीअ जा कुझु शेर तव्हांजे नज़र। करम यादि आयो, सख़ा यादि आई, हसी दिलरुबा जी वफ़ा यादि आई। छो भला धारियो अथव अहिड़ो मिज़ाज, पल में ख़ुशि पल में ख़फ़ा छा आहे नेठि। ॿिए दफ़ा चवे थो त दूर तोखां कीअं गुज़ारियमि ज़िंदगी, मां कॾहिं बहितर कॾहिं अबतर न पुछ। सुध न का सूरन संदी हुई ऐं पहिरीं 66 फ़ुरक़त में दिल दिलबर न पुछ। मां थियां तोखां परे ख़ुदा न करे, तो सवा मुंहिंजी सरे ख़ुदा न करे। वरी चए थो त न सोमा न ताना न तकरार ॼाणूं, असां प्यार वारा फ़क़ति प्यार ॼाणूं, न नफ़ो न नुक़सान पेशे नज़र आ, रखण यार राज़ी था सरकार ॼाणूं। अर्ज़ु करे चुको आहियां त इश्क ऐं मजाज़ असल खां शाइरनि जो पसंदीदा मौज़ू रहियो आहे। क़ुरून औला जे मुतक़दमीन खां वठी अहद हाज़िर जे मुताख़िरीन ताईं उन मौज़ूअ ते ख़ूब तब आज़माई कई आहे। उन करे फितरी तौरु रिवायत खे क़ाइमु रखंदे ख़ान जागीराणीअ तमामु सुठो लिखियो आहे। संदसि मजाज़ी कलाम मां कुझु वधीक नमूनो, कंहिंजो सवाल चहिरो कंहिंजो जवाब चहिरो, अहले नज़र जे आॾो आहे किताब चहिरो। सव कयम हीला मगर थी कान काई गुफ़्तगू, लाल लब ऐं ज़ुल्फ़ जे ज़ंजीर जूं ॻाल्हियूं कयमि। अची विया रिंद मैखानो वरी आबाद थो ॾिसिजे, हुयो जो ग़मज़दा कुझु बि उहो अॼु शाद थो ॾिसिजे। ख़ान अक्सर ख़ल्क़ अंदरि थो ॾिसां हिकिड़ो ख़्याल, हाल आहे तल्ख़ ॾाढो ऐं घणो माज़ी लज़ीज़। उन्हनि शहरनि में जा अरूज़ी पुख़्तगी रवानी सादगी ऐं तख़य्युल जी नवाण आहे। उहा ख़ान साईं खे ख़ूबसूरत शाइरनि जी सफ़ में आणे बीहारे थी। संदसि किताब सभु सजण जी यादि आहे 2008 में छपिजी पधिरो थियो। लिखे थो गीत काफ़ियूं शेर नग़मा सभु सजण जी यादि आ ॾुखनि जो ही सबब जो ग़म वॾो उस्ताद आहे। इश्क सां ई आदमी थो सुरख़ुरू हरदम थिए, वरन सारी ज़िंदगी बेकार आहे बर्बाद आहे। संदसि हुकुम ते 2006 में पंहिंजे किताब जे माॻ लिखण जो हुकुम कयईं। संदसि हुकुम जी ताबेदारी कंदे संदसि मुसवदो पढ़ियुमि, जंहिं हैरान करे विधो जो संदसि अरूज़ी पुख़्तगीअ सां अल्फाज़ ऐं शेर में रवानी ॾाढो मुतासिर कयो। सोन ते सुहाॻो इहो थियो जो संदसि उर्दू शेर पढ़ी बि हैरानी थी। संदसि हमदिया शेर आहे उर्दूअ में त बंदाए नाचीज़ है कमज़ोर है मजबूर है, कहती है जिसे खल्क वो है खान तुम्हारा। इश्किया शेर उर्दू में ये अजब बाज़ार है हर रोज़ तो सजता नहीं, हुस्न का जलवा जो देखा गुम हुए दीदार में।
کیا بتاؤں دلربا میں ہجر کی گھڑیوں کی بات، مجھ سے نہ ہوگی وہ بیاں اتنا نہ تو اصرار کر۔ خان جاگیرانی دوستن جو دوست، دکھ سکھ میں حاضر تھیण وارو، شادی غمیہ میں بر وقت شریک تھیण وارو شخص ہو۔ ہر 10-15 ڈینہں پانجے دوستن کے فون کرے خیر عافیت جا حال وال وٹھندو ہو۔ ہر سال جولائی مہینے میں سندس روڑیے میں منعقد کयल مشاعرن کافی شہرت ماणी، جو انہن مشاعرن میں ہو پانجے سر مہمانن جی خدمت میں محو ہوندو ہو۔ جولائی جے سخت گرمیہ میں پگھر سندس بدن کھاں پیو وندو ہو، تب مہمان نوازی جی نگرانی پاڻ کندو ہو۔ ہو ایک وڈو زمیندار ہو، سندس زمین میں کھجن جا باغ جام ہویا، سو مشاعرے میں آयल مہمانن کے بہترین مانی ٹکیہ ساں گڈ اصیل جا ڈنگ بھی پیش کندو ہو، ऐं مہمانن کے گھر کھڑی ونجण لائے بھی ڈنگن ساں بھرل شاپر ملندا ہوا۔ سندس انہن مشاعرن میں کراچی کھاں وٹھی کشمور، کندھکوٹ، لاڑکانو، ڈہرکی، پنجاب تائیں جا شاعر روڑیے جے شاعرن سمیت وڈے انگ میں شریک تھیندا ہوا۔ سندس کو دوست بیمار تھیندو ہو تو کوشش کرے ان جی مزاج پرسیء لائے وڈو سفر کرے اتے پہنچندو ہو۔ 2011 میں جڏहिं ماں بیمار تھی لیاقت نیشنل اسپتال کراچی میں داخل اس تو قرب کرے موکے ॾिसण آयो۔ اहिड़ी तरह कंहिं बि शाइर दोस्त जी बीमारीअ जो ॿुधंदो हो त वञी वटसि पहुचंदो हो। अहिड़नि मौक़नि ते हू मूंखे बि अक्सर पाण सां गॾु वठी वेंदो हो। अहिड़ो ख़ूबसूरत तबियत जो मालिक ऐं नरम दिल ऐं शफ़ीक़ इंसान पंहिंजी पीरसनी ऐं बीमारीअ जी हालत में क़बाइली झेड़नि जो निशानो बणियो। अहिड़ो सबाझड़ो ऐं मनपसंद इंसान हिकु अहिड़े जाहिलाना क़बाइली झेड़े जो बख बणिजी वियो, जंहिंमें ख़ान जागीराणीअ जो न फ़क़ति को हिसो न हो, बल्कि हू उन झेड़े ते हमेशह तनक़ीद ऐं तशवीश जो इज़हार कंदो हो। उन मामले में अक्सर मूंखे क़बाइली सरदारनि जे किरदार जे हवाले सां ॾाढो फ़िक्रमंद लॻंदो हो। 13 सेप्टेम्बर ते मथस हमिलो थियो। 15 सेप्टेम्बर 2021 जे शाम जो सखर में संदस शहादत थी। ये खूने खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। या दिल ॾारींदड़ ख़बर फेसबुक ज़रिए ईरान में मूंखे मिली। पुट खे फ़ोन करे ताज़ियत लाइ चई आलिन अखियुनि सां मरहूम जे बख़्शिश लाइ पाक सरज़मीन ते दुआगो थियुमि। जीअं त अहिड़नि वाक़िअनि में कातिलनि जी निशानदही न थींदी आहे ऐं न उन्हनि खे सज़ा मिलंदी आहे। ख़ान जागीराणी मरहूम जो रूह अॼु बि शायदि मुस्तफ़ा ज़ैदीअ जे लफ़्ज़नि में चवंदो हुजे, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। दुआ आहे त अलाह पाक संदस मग़फ़रत फ़रमाए, संदस पोयनि खे पंहिंजे बाबा जे दोस्तनि खे यादि रखण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अवां सभिनी जूं महिरबानियूं। सलामत रहो, शाद रहो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अच्छा सा कोई सपना देखो और मुझे देखो। अच्छा सा कोई सपना देखो और मुझे देखो। जागो तो आईना देखो और मुझे देखो। दो ही चीज़ें इस धरती पर देखने वाली हैं। दो ही चीज़ें इस धरती पर देखने वाली हैं। मट्टी की सुंदरता देखो और मुझे देखो। ऐं हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अरशद अली जागीरानी साहब जन के तो वो अची करे मोहतरम ख़ान जागीरानी साहब के हवाले सां असांखे कुछ यादगिरियूं ॿुधाइनि। मोहतरम अरशद अली जागीरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज ते वेहण वारनि खे ऐं जेके मौज़ूदीन साम्हूं वेठा आहिनि, तव्हां सभिनीनि जो वॾी महिरबानी। तव्हां मूंखे हिते घुरायो, मूंखे दावत ॾिनी त मां अबू जे लाइ कुझु लफ़्ज़ चई सघां। हिते ॾाढो सुठो पेश कयो साईं नूर रिज़वी साहब, इंतिहाई आला दर्जे जो। मां कयां हा त शायदि मां ईअं न चई सघां हा जीअं तव्हां चयो। अलाह असांखे तंहिंखे वधाए। खोड़ सारियूं अबू जूं अहिड़ियूं ख़ूबियूं ख़ुसूसियतूं आहिनि जेके सभिनी खे ख़बर आहिनि, मूंखे बि ख़बर आहिनि, पर उन्हनि खे हाणे शायदि एतिरो टाइम बि न डिस्कस करे सघिजे।
जॾहिं मां ॼायुमि त अबू जी उमिरि 41 ईयर्स हुई ऐं जॾहिं मां थोरो नंढपण मां क्रॉस थियुमि त अबू 50 जा हुया ऐं जवानी जे अर्ली स्टेजिस ते पहुतमि त अबू रिटायर थी चुका। अक्सर जेके बि महिमान अबू जा ईंदा हुया ऐं मुंहिंजो तारीफ़ थींदो हो त मूंखां पहिरां पुछंदा हुया त दातू तूं काऊं नंबर आहे? मां चवंदो हुउमि त मां 7 नंबर आहे। अबू जा तक़रीबन 20 औलाद आहिनि, जंहिंमां 12 पुट ऐं 8 धीअर आहिनि ऐं 3 उन जूं घर वारियूं आहिनि। सभिनीनि सां उहे हिकु तरह सां हलिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, घर में सपोर्ट, हर तरह सां। कंहिंखे बि काई शिकायत मुंहिंजे ख़्याल में न हूंदी। जवानी त उन्हनि जी अॻ में गुज़री चुकी हुई मूंखां, जेसिताईं मां सम्झ सां थियां, सेंसिबल थियां, यादि रखां, ॾिसां, त मां अबू जी कुराड़प ॾिठी। साईं जीअं ज़िक्र कयो लात मुशाइरो, मूंखे यादि थो पए त शायदि मां ग़लति आहियां वता 97 में शायदि मुशाइरो थियो हुयो हाई स्कूल रोहिड़ी में। मूंखे यादि पए पियो नालो मुर्शिद गीलानी साहिब जो नालो तव्हांजे थ्रू यादि आयो, मूंखे चहिरो यादि हुयो साईं जन जो। उहे अक्सर ईंदा हुया असांजे घर इन्हनि तरीक़नि सां डिस्कस करणु त किथे मुशाइरो कजे, कहिड़ी लात रखिजे, सॼो कुझु। ऐं बाद में उहो अॻिते हली आयो, अबू रिटायर थी विया। जॾहिं बि अबू कोई मुशाइरो रखंदा हुआ त वी फील हैप्पी त को फंक्शन थो अचे जंहिं ते महिमान ईंदा, असां उन्हनि खे खारकूं ॾींदासीं, असां उन्हनि जी ख़िदमत कंदासीं, कोशिशि कंदासीं वसूं त घटायूं न असां। गर्मी में जून जुलाई में अक्सर मुनक़द थींदो हुयो शायदि 1 जून ते, ऐं उन्हनि ॾींहंनि में ई कुझु ॾंग लहंदा हुया अर्ली स्टेजिस जा जेके हूंदा हुया। गर्मी में अबू पाण बाग़ ते वञी करे उहे पटराए करे शॉपर्स ठाराए करे डिस्ट्रीब्यूट कंदा हुआ पाण गर्मी में। ख़िदमत जो एॾो उन्हनि खे शौक़ु हुयो त मूं वटि को अचे जंहिंजी मां इज़त कयां, जंहिंखे मां मान ॾियां, जंहिंजी मां ख़िदमत कयां। बाक़ी साईं जन त सभु कुझु चई छॾियो मूंखां बहितर। अबू जूं काफ़ी ख़ुसूसियतूं आहिनि, काफ़ी ख़ूबियूं आहिनि। हिकु जेका सभिनी खां मूंखे अहम लॻंदी आहे, हर को माण्हू हर लिहाज़ सां हर माण्हू खे अलॻि तरीक़े सां जज कंदो आहे, जेको मां जज कयो मां उहे ॻाल्हाईंदुमि। उहे इंसान जी इज़त ॾाढी कंदा हुया, भले केर बि अचे, ॿार अचे, वॾो अचे, पंहिंजो परायो, ग़रीब अमीर। उन्हनि कॾहिं ईअं न ॾिठो त हीउ केरु आहे जेको मूंसां ॻाल्हाए थो। हुननि हमेशह रिस्पेक्ट ॾिनी। नंढो अचे, मुंहिंजो भाणेजो हुयो, उहो हिकु दफ़े रेहल ते वेही रहियो जिते क़ुर पाक रखी करे पढ़ंदा आहियूं असां। त मुंहिंजो भाउ हुनखे चइबो त उथ, हिन ते क़ुर पाक पढ़ंदा आहियूं। त अबू चयो न यार ईअं न कर, हिन ते क़ुर पाक पढ़ंदा आहियूं पर हीउ इंसानु आहे, हिनखे दड़को ॾेई करे न उथार। इहो त हिकिड़ो साम्हूं घर जो नंढो वाक़ियो। पर कॾहिं बि अबू वटि कोई बि हली आयो, जेका बि अबू जी हथ वस आहार हुई उन जी मदद कयूं, रिस्पेक्ट बि कयूं, मान बि ॾिनो। कॾहिं बि कोशिशि न कयूं त कंहिंखे बि झड़ बॼा। ही नेवर वेंट फॉर रिवेंज। कॾहिं बि कंहिं बि शख़्स जे बदिली जे लाइ न विया पंहिंजी लाइफ में। त या कॾहिं मूंसां डिस्कस कयो हुजे त यार हिन मूंसां हीअं कयो आहे, मूंखे बुरो लॻो, कुझु कयूं, नेवर। न ई मां कॾहिं ॿुधो, न ई मुनासिब बि आहे। जॾहिं इहो हादसो थियो अचानक सां, कराची में हुयासीं असां, वहम गुमान में बि न त अहिड़ो को हादसो थींदो असां सां। अलाह साईं हर कंहिंखे बचाए अहिड़े हादसे खां। सकर हिरा हॉस्पिटल जे ॿाहिरों अबू व्हील चेयर ते हुया, 2 भाइर अॻियूं हुया, हिकु व्हील चेयर खे पकड़े बीठो हुयो, ॿियो पोयूं ॿाहनि खां पोइ वठी गाॾी में विहारियूं। उन ई दौरान इहो हादसो थी वियो। अलाह से ख़ैर कयो। हॉस्पिटल में एडमिट थिया, अंदरि फैमिली आई, थोरो पैनिक माहौल हुयो। बाद में अबू चयो त दुआ कयो अलाह से एतिरो ख़ैरु थियो, छो जो उन वक़्तु काई फ़ौतगी न थी। दुआ कयो त जिन कयो आहे अलाह से उन्हनि खे हिदायत ॾे। लिटरली दीज़ वॉज दी वर्ड्स ऑफ माई फादर। दुआ कयो त अलाह से उन्हनि खे हिदायत ॾे। भली ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो वाक़ियो थियो, ॿियो न थिए, अलाह से उन्हनि खे हिदायत ॾे। पर ही कॾहिं बि कंहिंजे लाइ बि नेगेटिव कोन सोचींदा,
कोशिशि कंदा हुआ त जेतिरो थी सघे मां पॉज़िटिव रहां, पॉज़िटिव सोचां ऐं पॉज़िटिविटी में मां ॿियनि खे ख़ुशि रखां। मुंहिंजो फादर आहे, मां चाहींदुमि त भलो ॻाल्हायां, पर लिटरली उहो हुआ बि तव्हां सभु बहितर सम्झो था मूंखां वधीक। ॿियो जेको उन्हनि पंहिंजी लाइफ में ज़ोर ॾिनो उहो तालीम ते ॾिनो, नियाणी जी तालीम ख़ासि करे। असांजे ॻोठ वारे पासे में इलाइक़े में औरतुनि जी नियाणी जी तालीम जो कोई बि रुझान न हूंदो हुयो, घटि हूंदो हुयो। अब उते ॻोठ में स्कूल खोल रहियो, प्राइमरी ऐं सेकेंडरी बि नियाणी जी तालीम जे लाइ मंज़ूर बि करायईं, बिल्ड बि करायईं ऐं हलायईं बि सही। पर बदकिस्मती सां बाद में स्टाफ न हुजण जे करे हाणे शायदि उहो बंदि थी वियो। त नियाणियुनि जी तालीम ते अबू काफ़ी तवजा ॾींदा हुया त नियाणियुनि खे जेकॾहिं तालीम आहे त उहे ॿिए जे हथूं कॾहिं बि मजबूर न थींदियूं या उहे पाण खे कमज़ोर न सम्झंदियूं। तालीम ऐं इल्मु उन्हनि खे ताक़तवर महसूसु कराईंदो, इहा उन्हनि जी सोच हुई। ऐं उहे मुआशिरे में कॾहिं बि कॾहिं बि हेठि झुकी करे न रहंदियूं। तालीम हूंदुनि, हुनुर हूंदुनि त पंहिंजी औलाद जे लाइ सोचींदियूं, पंहिंजे लाइ सोचींदियूं। अलाह साईं उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे। रब रहमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ॾाढो भलो तव्हां फरमायो, अलाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे। थैंक यू। ऐं गुज़ारिश कंदुसि वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बेनज़ीराबाद मोहतरम मदद अली शाह साहब जन खे त हू स्टेज ते अचनि ऐं अची करे अॼोके प्रोग्राम जो सदारती ख़िताब पेश कनि। मोहतरम मदद अली शाह साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with two verses of Sayyid Shah Abdul Latif Bhitai Rahmatullah alayh. The avjhad vata aao biyu sab sugar saathasi ja neeh ginandi na sa munjiye pawndi mamre. Ai sartin sahja manjha जॾहिं कोड रंगाया कपिड़ा तॾहिं मुंहिंजी माउ थे पाण आछा पॿ जा। रिस्पेक्टेबल साईं अयाज़ गुल साहब, रिस्पेक्टेबल साईं मुमताज़ बुखारी साहब, my all respectable colleagues, Sayyid Noor Rizvi Sahab sitting on stage, my respectable literary personalities, Malik Sahab, Mahar Khadim Sahab, Dr. Adil Sumro Sahab, Imdad Shah Sahab, Sayyid Akhtar Dargahi Sahab, and all respectable dignitaries. Assalamu alaikum to all of you. It's really a great pleasure for me because I consider myself as one of the least literary person to come here and address you all literary personnel. I've been ordered by my respectable colleague Sayyid Ayaz Gul Sahab, and I think 15 days ago we fixed this date, but unfortunately because of my sore throat and for last 5-6 days I've been consistently and constantly in travel. पर वो उर्दू का एक शेर मुझे याद आ गया कि सर का हुक्म था तो और मेरा वादा भी था, तो रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध दिए पाँव में। तो हाज़िर हो गए आपके पास। सही हिन शहर सां ऐं हिन ख़िते सां मुंहिंजूं तमामु घणियूं यादूं वाबस्ता आहिनि। मां सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाईंदो हलां त मुंहिंजो तालुक़ु हालाणी शहर सां आहे। हालाणी डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फिरोज़ जो हिकिड़ो नंढड़ो शहर आहे मेहरापुर तालके में। हितां तव्हां हाईवे ते जेकॾहिं वेंदव त कोटड़ी मोहम्मद कबीर रसूलाबाद खां पोइ पहिरियों शहर आहे नौशहरो फिरोज़ जो, उन खां पोइ हालाणी आहे जंहिंखां असांजो नौशहरो फिरोज़ ज़िलो शुरू थो थिए। पर मुंहिंजी अमड़ रोड़ीअ जे भरिसां हिकिड़ो नंढड़ो ॻोठु साधलो या महदीआबाद उतां जी आहे। जी साईं, रोड़ी सीमेंट फैक्ट्री खां थोरो अॻु में जेको रस्तो वेंदो आहे। त मुंहिंजो काफ़ी बचपन हिते गुज़रियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड वारे हिसाब सां बि साईं चयो त मां चयो हाणे इहे जेके टई माशाल्लाह वॾियूं शख़्सियतूं आहिनि, नखत बरेलवी साहब
ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जागीरानी साहब, बशीर मंगी साहब, मूंखे पाण उन्हनि जी ज़िंदगी मां वॾा सबक़ मिलिया आहिनि। पर साईं चयो त मां उन्हनि शख़्सियतुनि खे घणो न सुञाणा ऐं उन्हनि जा नाला बि अॼु ई मां ॿुधाया। पर साईं जन चयो त कुझु पंहिंजे बारे में जनरल यूनिवर्सिटी जे बारे में ॻाल्हायो, त उन करे मां चयो त 5-10 मिंट मां तव्हांखे ॻाल्हाईंदुमि पंहिंजे बारे में। साईं, मुंहिंजो ग्रेट ग्रैंडफादर हाजी मीरा मोहम्मद शाह 1910 में देवबंद मदरसे जो फ़ारिग़ु तहसील आलिम हो ऐं जॾहिं उतां मोटियो त ही वॉज इक्वली लाइकली रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, बरेलवी, देवबंदी, तशय्युअ, अहले तसुन्नन, सभ खां वधीक मुंहिंजे ॾाॾा साईं जेको असांजो पड़दाॾा हो, उन हिकिड़ो कमु कयो जंहिंखे मां कोट कंदो आहियां सभिनी लाइ ऐं हथ ॿधी अर्ज़ु कंदुमि उन्हनि सभिनी हज़रात खे जेके पीरी मुरीदी ऐं दरगाहुनि सां वाबस्ता आहिनि, त ॾाॾा साईं पंहिंजे सभिनी चइनी पुटनि खे विहारे चयो त अॼु खां मां पंहिंजे ख़ानदान में पीरी मुरीदीअ जो ख़ात्मो थो कयां। सबबु चयूं त क़ुरान जी क्लियर आयत आहे त इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तव्हां में बहितर उहो आहे जेको मुतक़ी आहे, परहेज़गार आहे। असां सादात खे इज़त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे सदक़े में उन जे मुआबे में मिलियल आहे। असांजो ग़रीबनि ॾे घोड़े ते चढ़ी वञूं ऐं उन्हनि खां ॾनु वठूं, उन्हनि खां कचूं दावतूं वठूं, बकरा वठूं, देसी कुकड़ियूं वठूं, सचनि गिहनि जा दॿा, माखियुनि जा शीशा वठूं, असां त उन्हनि खे ॾेई अचूं न, उन्हनि खां वठूं छो? पोइ पंहिंजे पुटनि खे विहारे चयूं त पुट अॼु खां पीरी मुरीदीअ जो ख़ात्मो, हाणे इल्मु हासिलु कंदव त कामयाबु थींदव, न कंदव त बुख मरंदव। पोइ साईं उन वक़्तु इहो कॉन्सेप्ट तव्हां ॾिसो, प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हिकिड़ो मुंहिंजो ॾाॾा साईं देहरादून मिलिट्री अकेडमीअ मां पढ़ी आहे, ॿियो मुंहिंजो ॾाॾा साईं जूनागढ़ मां पढ़ी आयो ऐं साईं मदद अली सिंधी साहब जेको फेडरल मिनिस्टर हो, उहे मां सां गॾु वेठा इस्लामाबाद में, मां साईं जन जेके इंटरिम दौर में मिनिस्टर आहे, त उन्हनि मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजो नालो मदद अली शाह तव्हांजे ॾाॾा साईं जे नाले ते मुंहिंजे फादर रखियो, छाकाणि साईं ग़ुलाम मोहम्मद शाह मुंहिंजे फादर सां गॾु सिंध मदरसतुल इस्लाम में क्लास फेलो। उन करे असांजे सभिनी ब्रदर्स जा नाला ॿियनि असांजे वॾनि जे नालनि ते आहिनि, पर मुंहिंजो नालो मदद अली तव्हांजे ॾाॾा मदद अली शाह जे नाले ते रखियो वियो। त असांजो ॾाॾा साईं ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज़ अ क्लार्क इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। पोइ उन वक़्तु हायर जो एग्ज़ाम पास करे मुख़्तियार कार थिया, जंहिंखे FCM चवंदा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जेके सभु गोरा हूंदा, अंग्रेज़ हूंदा, हिंदू मुस्लमान तमामु घटि हूंदा। उन खां पोइ ही क्वालिफाइड ICS, इंडियन सिविल सर्विसिस कमीशन। साईं GM सैद पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त जॾहिं विरहाङो थियो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान सां, उन वक़्तु 5 सिंधी स्पीकिंग ICS ऑफिसर हुआ, जंहिंमां 2 हिंदू हुआ, 3 मुस्लमान, ऐं ॾाॾा साईं वॉज वन ऑफ देम। मुंहिंजो फादर, असांजो मिडिल क्लास फैमिली आहे, हालांकि एकेडमिक फैमिली, पर मिडिल क्लास फैमिली आहे। मुंहिंजो फादर आर्मीअ में लेफ्टिनेंट कर्नल हो। हिते मूंखे यादि आहे मुंहिंजी मैटरनल फैमिली सहतो आहे बाय कास्ट। साईं इकबाल रूहानी साहब जन जो साईं तस्करो कयो अख़लाक़ अहमद अख़लाक़ जो, असां राति जो साइकिल ते वेंदा हुआसीं, वञी ॻोठनि में रहंदा हुआसीं, उहे कचहरियूं मूंखे यादि आहिनि। वरी हितां दादन जा कबाब वठंदा हुआसीं, वरी वेंदा हुआसीं। ऐं तव्हांखे जीअं मां ॿुधायो, मूंखे इन ॿुधाइण में का बि आर महसूसु नथो थिए त हिकिड़ो दफ़ो मां हेॾे हलियो आयो हुउमि, ॿिए ॾींहुं हिते हिकिड़ो क्विज़ कॉम्पिटिशन हो सखर जो, मामा चयो त उन में तूं पार्टिसिपेट कर। सर्दी ॾाढी, मां चयो मामा मूंखे त स्वेटर कोन्हे, ऐं उन वक़्तु मामा जो कदु ॾाढो वॾो हूंदो हो। पोइ मामा मूंखे चयो त हलूं था, हाणे जल्दी जल्दी में छा कयूं। मूंखे यादि आहे त मामा साईं मूंखे हिकु नीलामी स्वेटर ₹2.5 जो वठी ॾिनो, उहो पाए मां वियुमि ऐं उन में वञी मां मुक़ाबले में शिरकत कई। त इहे नंढे नंढे लाइ जूं ॻाल्हियूं। वरी उन खां पोइ हेॾे ईंदा हुआसीं, लाइब्रेरी में साईं ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह हिते हूंदो, साईं नसीर शाह जो वालिद साहबु। मां तॾहिं तयारी कंदो हुउमि MA इंटरनेशनल रिलेशन जी ऐं CSS जी। ऐं साईं जी वॾी हिकिड़ी जिदोजहद आहे, तव्हां सभिनी सखर वारनि खे ख़बर हूंदी त पंधु ईंदा हुआ हिते, वरी हितां पंधु वेंदा हुआ, वरी शालीमार उते जेको आहे सो मेहराण मर्कज़ में होटल में कमु कंदा, वरी पोइ उन खां पोइ सुज़ुकी में घरु वेंदा, ऐं CSS ऑफिसर्स जी पाण तयारी कराईंदा।
ऐं उन लाइ किताब अख़बारूं पाण घुराए ॾींदा हुआ। त तमामु वॾी हिकिड़ो ख़िदमत जो सिलसिलो अहिड़नि माण्हुनि खां यकीन कयो असां लाइ मशले राह आहिनि। ऐं मूंखे एॾी ख़ुशी थी आहे जॾहिं अॼु मां ॾिठो त साईं अयाज़ गुल जेको असांजो वॾो आहे, महिरबानी आहे, जॾहिं मां 92 में लेक्चरर थियुमि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर में, त साईं असांजो गाइड हो। ऐं साईं मुमताज़ मुंहिंजो जेको पहिरीं बैच हुई, हालांकि साईं असां हम उमिरि आहियूं, पर जेका मुंहिंजी पहिरीं बैच जा शागिर्द आहिनि, मूंखे मां फ़ख़्र सां चवंदो आहियां त साईं मुमताज़ बुखारी ऐं अदीअ खे अलाह साईं जन्नत नसीब करे, अदी शमीम उन्हनि मुंहिंजनि प्यारनि स्टूडेंट्स मां हिकु आहिनि। त उन करे हिकु ॾाढो सुठो वक़्तु गुज़रियो ऐं भले नमूने सां पाण पढ़ियासीं, महिनतूं कयूंसीं। मेराड यूनिवर्सिटीअ में बि मां थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहियुमि, अल्हम्दुलिल्लाह सुठो वक़्तु हो। मां 7 नौकरियुनि लाइ अप्लाई कयो, मुंहिंजे घर में 7 अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया। इहो मेरिट जो दौर हो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहे ॻाल्हियूं यादि आहिनि मूंखे सुठे नमूने सां। लतीफ़ साईं जो शेर आहे न साईं, त आऊं ॾॾाई ॾॾ पर ॾॾ न ॾॾनि जहिड़ो, पोइ सुणी आयसि सॾु ॾातिर तुंहिंजी ॾात जो। सो इहा जेका अॼु असां वटि अदबी माण्हुनि में ॿियनि में हेठां ई आहे, जीअं साईं तस्करो कयो त हिन अज़ीम हस्ती जागीरानी साहिब जो, ॿियनि जो, मुंहिंजे ख़्याल में इहो ई असांजो मुआख़िज़ आहे, असांजी ज़िंदगी जो मजमूओ इहो आहे। ऐं अॼु असां जेको सम्झूं था न, त वरी मूंखे हिकिड़ो उर्दूअ जो शेर यादि अची वियो त छोटा हूँ इसलिए मुझे ऐसा है सबके याद और मौसन को मैं बुला दूँ इतना बड़ा नहीं। मां खे अल्लाह साईं नवाज़ियो, मां 12 मास्टर्स कई, डॉक्टरेट कयमि यूनाइटेड किंगडम मां। उन खां पोइ मोटी अची साईं निसार सिद्दीकी जी दावत ते मां सखर IBA जॉइन कयो। ऐं सखर IBA जो पाइनियर त साईं निसार सिद्दीकी आहे, पर उते इंजीनियरिंग मां शुरू कई। ऐं मां साईं निसार सिद्दीकीअ खे इहो चयुमि, मां साईं इंजीनियरिंग असां शुरू कयूं था, इंजीनियरिंग ॾाढी महांगी आहे, लैब्स आहिनि। साईं चयो त लैब्स जो तव्हां फ़िक्र न कयो, क्वालिटीअ ते कंप्रोमाइज़ न थिए। ऐं मूंखे यादि आहे त असांजी फस्ट बैच में 40 मां साईं 10 माण्हुनि खे डिग्री मिली, 30 स्टूडेंट फेल थिया। ॿी बैच में 40 मां 38 स्टूडेंट फेल थिया, 2 ॼणनि खे डिग्री मिली। पर जिन खे डिग्री मिली दे वर लाइक हॉट केक्स। हाणे हींअर असांजा ग्रेजुएट पूरे पाकिस्तान में आहिनि ऐं असां फ़ख़्र सां चऊं था त असांजो सखर IBA जो इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट, बिज़नेस जो ग्रेजुएट, NET, मेहरान, UET लाहौर ऐं लम्स जो मुक़ाबिलो कंदो, बल्कि उन्हनि खे बीट कंदो इंशाअल्लाह। त सखर IBA में मुंहिंजो इहो कॉन्ट्रीब्यूशन रहियो। पोइ अल्लाह साईं मूंखे नवाज़ियो, मां पहिरियों वाइस चांसलर थियुमि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जेका फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश थी ख़ैरपुर में। 6 साल उते मां वाइस चांसलर रहियुमि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उते मां हिकिड़ो स्लोगन हयो त नो कंप्रोमाइज़ ऑन AAA। फर्स्ट इज़ अटेंडेंस, सेकेंड इज़ एडमिशन, थर्ड इज़ अपॉइंटमेंट। जंहिंजी अटेंडेंस न हूंदी, भली केतिरो बि सियासी प्रेशर हुजे, उहो इम्तिहान में न वेहंदो। एडमिशन प्योर मेरिट ते थींदी ऐं अपॉइंटमेंट प्योर मेरिट ते थींदी। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहे 6 साल मां कढिया। उन खां पोइ सेकेंड टेन्योर मूंखे न मिलियो। उन जो बि सबबु इहो हो त मां उन्हनि सभिनी वॾेरनि जे साम्हूं आण न मञी। पर अल्हम्दुलिल्लाह उन खां पोइ वरी मां इंटरव्यू ॾिनो। हींअर मां हाईली पॉलिटिसाइज़्ड शहर नवाबशाह में आहियां ऐं तव्हांजी दुआउनि सां गुज़िरियल 1.5 साल खां वाइस चांसलर जा फ़राइज़ सरअंजाम ॾेई रहियो आहियां। असां वटि लॉ सां शुरू कई आहे, आर्ट एंड डिज़ाइन आहे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन आहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे, कंप्यूटर साइंस आहे। मां सभिनी दोस्तनि खे बिनती कंदुमि, मिंथ कंदुमि त अचो मुंहिंजी यूनिवर्सिटी विज़िट कयो, असांखे ॿुधायो त इनखे वधीक कीअं असां इम्प्रूव कयूं, वधीक कहिड़े नमूने सां इन मां लाभ हासिलु कयूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जा लख थोरा। मां हज़रत अहमद नदीम कासमी जो ही शेर चई पंहिंजी जान वठंदुमि, पंहिंजी जॻह वठंदुमि त यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो उगा रहे सदियों, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल न हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। मेहरबानी। जगत लोध्यास तू न लोधिज लॾ धणी, कची कमीणी एबन भरी हुयास, पलव तो पयास
बख़्श बदियूं बदकार जूं। इन जी सदारती ख़िताब ते असां अॼु जे प्रोग्राम जो इख़्तिताम कयूं था। आख़िर में मां गुज़ारिश कंदुसि सखर आर्ट्स काउंसिल जे सदर मोहतरम मुमताज़ बुखारी साहब जन खे त उहो अची करे आख़िर में महिमाननि जा थोरा मञनि ऐं अलविदाई लफ़्ज़ चवनि। स्टेज ते वेठल मानायता मोज़िज़ महिमान ऐं ओतिरा ई मानायता ऐं मोज़िज़ महिमान जेके साम्हूं वेठा आहिनि, सभिनी खे हक़ मौजूद सिंध मौजूद। असीं उन्हनि प्रोग्रामनि जे सिलसिले में ही बि प्रोग्राम रखियोसीं जंहिंमें असीं सखर जा सितारा जेके असां खां विछड़ी विया आहिनि या असां सां मौजूदु आहिनि उन्हनि खे यादि करण ऐं उन्हनि खे भेटा ॾियण जे हवाले सां ही प्रोग्राम कंदा रहंदा आहियूं, जंहिंमें अदब जो शोबो हुजे, फ़न जो शोबो हुजे, राग जो शोबो हुजे, मुसवरी जो शोबो हुजे या सकाफ़ती शोबो हुजे। उन्हनि सां लाॻापियल समूरनि माण्हुनि खे असां कोशिशि कयूं था। सखर आर्ट्स काउंसिल पंहिंजी पूरी कोशिशि करे पई त बिना कंहिं इन ई ॻाल्हि जे त केरु असां सां इख़्तिलाफ़ रखंदड़ हो या न रखंदड़ हो, केरु कहिड़े मज़हब सां कहिड़ी ॿोलीअ सां वास्तो रखे थो, छो त असांजी हिकिड़ी ॿोली आहे अदब फ़न ऐं तख़लीक़ जी ॿोली, ऐं उन्हनि खे असीं भेटा ॾींदा आहियूं। हीअ बि उन सिलसिले में प्रोग्राम हो ऐं ॿिया बि असांजा ईअं ई प्रोग्राम रिथियल आहिनि ऐं अॻिते बि सखर आर्ट्स काउंसिल ईअं ई पंहिंजा प्रोग्राम रिथींदी रहंदी। तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी जो पंहिंजो वक़्तु कढी तव्हां असां सां गॾु वेठा आहियो। वॾी महिरबानी।